Hello, my name is Kainat Sadaf, and this is my face sign. I can't thank DeafReach enough, because now I'm not just another deaf girl who is a burden on their family. Today, I'm independent. I not only support myself, but my family as well. DeafReach has completely changed my life. My relatives and the people who know me used me as an example to show how far I've come. My story is the proof that if you have passion and the right support, you can make anything possible. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बहरूज सब्जवारी। आज मुझे DeafReach आने का मौका मिला और यहाँ जितने स्टूडेंट हैं, जितने बच्चे हैं, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और उनसे मिलके मुझे बेहद खुशी हुई। जिस तरह का माहौल इन बच्चों को यहाँ दिया जा रहा है, जिस तरह की स्किल्स इनको सिखाई जा रही है, जिस मेहनत से, और यकीन जानिए जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं वो यहीं से पढ़े हुए बच्चे हैं जो अब टीचर्स हैं। जबरदस्त काम कर रहा है DeafReach। बदकिस्मती से हमारे इस मुल्क में, इस प्यारे पाकिस्तान में, डेफ बच्चों की स्कूलिंग के लिए, उनकी तरबियत के लिए कोई मौका ही नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं। और यकीन जानिए कम से कम 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको तालीम की, उनकी ब्रॉटअप की जरूरत है। और याद रखिए, इन तमाम बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। मेरा नाम जावेद शेख है और आज मैं आपसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो कि ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं, और बहुत दुख की बात है कि इनमें से 90% से भी ज़्यादा बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। आज मैं एक ऐसे खास इदारे में खड़ा हूँ जिसका नाम है DeafReach। DeafReach का ये ख्वाब है कि पाकिस्तान के तमाम डेफ बच्चों को बेहतरीन तालीम मैसर हो, और ये पिछले 30 सालों से इस ख्वाब को ताबीर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी बारी है कि हम DeafReach को सपोर्ट करें ताकि वो पूरे पाकिस्तान के डेफ बच्चों के ख्वाबों को परवान चढ़ा सके। इस रमज़ान मेरी आपसे गुजारिश है कि DeafReach को अपने एहतियात और ज़कात दे और हज़ारों डेफ बच्चों का
मुस्तकबिल रोशन बनाएं। I am the only deaf in my family. फिर मुझे डिफ्रिज का पता चला, फिर यहाँ पे मैं इसको लेके गई हूँ, एडमिशन कराया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद में बहुत अच्छा मुझे फील हुआ कि मेरी बच्ची में इतना कॉन्फिडेंस आया कि सब कुछ कर सकती है, किसी चीज़ में ही पीछे नहीं है, किसी से भी नहीं। कि आज से हम 13-14 साल पहले जो स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ पे हमें महसूस हुआ कि ये महदूद रहेगी शायद। तो हमें किसी ज़रिए मालूम हुआ कि डिफ्रिज स्कूल का, तो हमने मालूमात ली और माशाल्लाह से हमने जितना सोचा तो उससे बहुत ज़्यादा, और एक फैमिली की तरह उन्होंने अपने साथ रखा बच्ची को, हमारे साथ ताउन बड़ा अच्छा किया। When I was 13, I joined DeafReach, where I did not just get education, but also the ability to communicate through sign language. Here, I learned so many new things, such as cooking, fine arts, digital skills, and much more. I have always loved to paint since I was a child. DeafReach gave me the chance and a platform to further explore my passion. I want to grow up to be a well-known artist one day. I recently won a prize in an art competition organized by the UAE Consulate and Sin Education Department. I was the only deaf winner out of the 36 other candidates, all of whom could hear. I have a message for the hearing community that we should all learn sign language so that we can break the barriers to communication and be inclusive for all. Thank you. पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि समाज से महरूम हैं। बदकिस्मती से सिर्फ 5% बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास इस फैसिलिटी को, ऐसी किसी फैसिलिटी को इस्तेमाल करने के वसाइल मौजूद हैं। आज हम खड़े हैं एक ऐसी इदारे में, डेफरीच, एक ऐसा इदारा जो कि समाज से महरूम अफराद को नर्सरी से लेके BA तक, साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग फराहम कर रहा है। ये लोग यहां से तालीम हासिल करने के बाद मुआशरे में अपने आप को एक बेहतर कारगर फर्द के तौर पर रजिस्टर करवा रहे हैं। 2500 मुलाजमतें इस इदारे के जरिए फराहम की जा चुकी हैं। लेकिन इस इदारे को पूरे मुल्क में काम करने के लिए आपकी मदद की बेतहाशा जरूरत है। इस इदारे का साथ दीजिए, डेफरीच का दस्तबाजू बनिए।
सारा डेफ रीज स्कूल को शरिया एडवाइज़री फ़राम करता है ज़कात यूटिलाइजेशन के हवाले से, ज़कात कलेक्शन के हवाले से। इस इदारे में मुस्तहिक़ बच्चे भी पढ़ते हैं और उनके लिए ज़कात कलेक्ट की जाती है। जो ज़कात कलेक्ट की जाती है वो भी शरिया के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक कलेक्ट की जाती है। फिर जो ख़र्च की जाती है वो भी मुस्तहिक़ीन पर ख़र्च की जाती है। चूँकि इनके ज़कात का निज़ाम हमारी निगरानी में है, लिहाजा हम इसकी तस्दीक करते हैं कि जो मुखय्यर हज़रात या इदारे इस डेफ रीच स्कूल को ज़कात देंगे तो उनकी ज़कात अदा हो जाएगी और सही मसरफ़ में भी ख़र्च होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्कूल का काम कर लिया? ठीक है, खूब दिल लगा के पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हें ही बुढ़ापे का सहारा बनना है हमारे। चलो जल्दी भागो, स्कूल का टाइम हो रहा है, भागो जल्दी। अरे अभी तक ये भी नहीं बंधी, उन्हीं भी बांधनी नहीं आती। आँखों में ये हैरतें सजा के चले, देखे कल की ओर मुस्कुरा के। आँखों में ये हैरतें सजा के चले, देखे कल की ओर मुस्कुरा के। सीखता जा दिल जो चाहे, उम्रों की किसको फिक्र। आँखों में ये हैरतें सजा के चले, देखे कल की ओर मुस्कुरा के। आँखों में ये हैरतें सजा के चले, देखे कल की ओर मुस्कुरा के। जिंदगी के सब सवालों में ही छुपी है टकर। आँखों में ये हैरतें सजा के चले, देखे कल की ओर मुस्कुरा के। आँखों में ये हैरतें सजा के चले, देखे कल की ओर मुस्कुरा के। Hello, my name is Kainat Sadaf, and this is my face sign. I can't thank DeafReach enough, because now I'm not just another deaf girl who is a burden on their family. Today, I'm independent. I not only support myself, but my family as well. DeafReach has completely changed my life. My relatives and the people who know me used me as an example to show how far I've come. My story is the proof that if you have passion and the right support, you can make anything possible. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बहरूज सब्जवारी। आज मुझे डेफ रीच आने का मौका मिला और यहाँ जितने स्टूडेंट हैं, जितने बच्चे हैं, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और उनसे मिलके मुझे बेहद खुशी हुई। जिस तरह का माहौल इन बच्चों को यहाँ दिया जा रहा है, जिस तरह की स्किल्स इनको सिखाई जा रही है, जिस मेहनत से, और यकीन जानिए जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं वो यहीं से पढ़े हुए बच्चे हैं जो अब टीचर्स हैं। जबरदस्त काम कर रहा है डेफ रीच। बदकिस्मती से हमारे इस मुल्क में, इस प्यारे पाकिस्तान में, डेफ बच्चों की स्कूलिंग के लिए, उनकी तरबियत के लिए कोई मौका ही नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं। और यकीन जानिए कम से कम 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको तालीम की, उनकी ब्रॉटअप की जरूरत है। और याद रखिए, इन तमाम बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। हमने एक ऐसे इदारे की बात रखने जा रहे हैं जो इदारा पाकिस्तान में बिलखसूस और पूरे मुल्क में बिलउमूम एक ऐसे शोबे को इंगेज कर रहा है, एक ऐसे तबका ज़िंदगी को इंगेज कर रहा है जिससे जिनका वास्ता हमसे बहुत कॉमनली पड़ता है। मैं और आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा वास्ता रखते हैं, लेकिन बतौर पाकिस्तानी सोसाइटी वी डू नॉट नो हाउ टू इंगेज विद दीज पीपल, हाउ टू मेक देम यूजफुल मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी। आज मैं सैयद शफात अली आप लोगों के सामने एक कहानी पेश कर रहा हूँ, और ये कहानी है आज से 2 साल पहले की। सो 2 years ago हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं अवैस इकबाल साहब। ही कॉल्स मी इन एंड ही सेड कि आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस टू दिस गाय, एंड आपके घर के बहुत नज़दीक रहते हैं, यू शुड मीट दिस गाय। आई सेड आई प्रॉब्ली हैव हर्ड अबाउट हिम, बट आप मुझे बताइए किसकी बात करें। तो उन्होंने कहा जी एक साहब हैं रिचर्ड गेरी साहब, आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए और मैं आपको साथ लेकर चलूँगा। ऐसा चलिए मिलते हैं। सो कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में हम पहुंचते हैं डेफ रीच के स्कूल में। डेफ रीच एक ऐसा स्कूल है कि जिसके अंदर समाज से महरूम बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, और न सिर्फ ये कि वो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है। तालीम का सिलसिला जो है वो फ्रॉम KG टू ग्रेजुएशन BA तक है। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, और उनको वो तमाम सहूलियात दी जा रही हैं कि जिनका मैं और आप किसी मगरबी मुल्क में, किसी वेस्टर्न कंट्री में तो तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म के इदारे का मौजूद होना, पाकिस्तान में इस किस्म के इदारे का लोगों की खिदमत के लिए इतना आगे रहना, दिस इज़ प्रीटी अनयूजुअल। हमारी मुलाकात हुई जनाब रिचर्ड गेरी साहब से। उन्होंने मैं अपने स्कूल का दौरा कर स्टूडेंट्स से मिलवाया। मैं आपको ये बात बग़ैर कह रहा हूँ, देयर इज़ नो एग्जैजरेशन इन इट, दैट आई वाज ब्लोन अवे, आई वाज शेल शॉक्ड। जो मैंने बच्चों के चेहरे पे खुशी देखी,
जिस तरह से वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, खुद बच्चे मुझे देख के जिस तरह एक्साइटमेंट शो कर रहे थे, एंड एवरी स्टूडेंट वांटेड मी टू कि वो उसका फ़लाँ काम देखूं, उसकी ड्राइंग देखूं, हैंडीक्राफ्ट देखूं, उसका आर्ट वर्क देखूं, उसकी किताबें देखूं। एंड बच्चों ने जितना सरप्राइज़ किया मैं आपको बता नहीं सकता। तो उसके बाद से मैंने इस इदारे को पढ़ना शुरू किया, और अब से कुछ ही दिन पहले वी केम टू अ कंक्लूजन दैट इस इदारे का काम इस कदर बड़ा है, क्योंकि ये इदारा 2000 से ज़ायद बच्चों को इस वक्त तालीम दे रहा है। पाकिस्तान के 8 शहरों में मौजूद है, इसके कैंपसेस मौजूद हैं। वो कैंपसेस बच्चों को तालीम दे रहे हैं, बच्चों को लंच दे रहे हैं, बच्चों को, उनके अहल खाना को, उनके वालिदैन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, जहाँ हमारे पास कोई भी बच्चा विद स्पेशल नीड्स जब माशरे में हमें नज़र आता है, तो हमारे पास उसकी कंजम्पशन के लिए, उसकी यूटिलाइजेशन के लिए ना कोई प्लेटफॉर्म है और ना उससे कम्युनिकेट करने के लिए कोई तरबियत है, कोई ट्रेनिंग है, जिसका नतीजा आपने बहुत सारे लोगों ने जो पाकिस्तान आए हैं, जिन्होंने देखा है उन, और अपने बचपन में भी जिन्होंने वक्त पाकिस्तान में गुजारा, जानते होंगे कि इसका एक बहुत ही अजीब व गरीब सा माशरे में एक आउटकम है, और वो है बुलिंग का। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे इदारों को, ऐसे अफराद को जब आप ट्रेनिंग देते हैं, उनके ख़ानदान को ट्रेनिंग देते हैं, तो उनकी भी एक अपने बच्चों को देखने का ज़ाविया बदल जाता है। वो भी अपने बच्चों के साथ उसी तरह कम्युनिकेट करते हैं जिस तरह से बाकी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज बिलखसूस इसी से बातचीत करने जा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये इदारा है डेफ रीच। मैं हूँ आपका मेज़बान शफ़ात अली, और आपके सामने स्क्रीन पर कुछ नंबर्स आ रहे हैं। आपके सामने एक नंबर मौजूद है हमारे नॉर्थ अमेरिका के नाजरीन के लिए, +1 917 565 8801। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर आप अपनी ज़कात या अतियात हमें देना चाहें तो उस हवाले से हमारे टीम्स आपसे बात कर सकती हैं। साथ ही आपको हमारा एक वेबसाइट लिंक नज़र आ रहा है, जिस वेबसाइट लिंक के अंदर आप डेफ रीच NA नॉर्थ अमेरिका पे जाके आप इस इदारे के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं, और न सिर्फ मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं बल्कि आप इस इदारे को डोनेट भी कर सकते हैं। जो सबसे मुनफरिद बात है इस इदारे की, ख़वातीन व हज़रात, जो बतौर पाकिस्तानी आपका सर फ़ख्र से बुलंद कर देगी, वो ये कि अभी आप कुछ दिन पहले एक PSL गुजरा है, पूरी कौम उसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन एक PSL है जो कि गुज़श्ता 12-15 सालों से इस मुल्क में जारी है, और वो PSL है ख़वातीन व हज़रात पाकिस्तान साइन लैंग्वेज का। पाकिस्तान की एक अलग साइन लैंग्वेज जो कि मौजूदा साइन लैंग्वेज से मिलती जुलती है, लेकिन पाकिस्तान के कल्चर के तनाजुर में, पाकिस्तान की सकाफ़त के तनाजुर में उस साइन लैंग्वेज को डेवलप किया जा रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि ये इदारा इस कैंपस के अंदर ट्रेनिंग नहीं कर रहा, ये इदारा डिजिटल कंटेंट बना रहा है उन लोगों के लिए जो कि इन बच्चों के साथ ख़ुद को एसोसिएट करना चाहते हैं, रिलेट करना चाहते हैं। इस इदारे से जो लोग फ़ारिग तहसील हो रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो बच्चे अब माशाल्लाह से जॉब्स कर रहे हैं। बहुत सारे इदारे इस इदारे के पैनल पे ऑन बोर्ड हैं जो कि अपने इस इदारे के ग्रेजुएट्स को अपनी कंपनीज़ में, अपने डिपार्टमेंट्स में अकोमोडेट करें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जिसको अगर मैं सुनाता जाऊँ तो ये ख़त्म नहीं होगी। और ये इदारा पाकिस्तान में कितने अरसे से मौजूद है, इसको कौन चला रहा है, और क्यों ये इदारा आपके ज़कात और अतियात का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, इस हवाले से बात करने के लिए आई एम वेरी ऑनर्ड दैट आई एम जॉइंड बाय द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, Richard Geary. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Richard, I see this star shining on you as a coat pin, which is probably Sitara-e-Khidmat. Yes, I proudly wear my Sitara-e-Khidmat award, which I received in 2022. 2022. So Richard, tell us about this whole journey. You came to Pakistan like 35 years ago? Actually, my wife and I came to Pakistan in the late 1980s, so more than 35 years now. Okay. We're parents of a deaf child. Okay. And that's how our journey began. Actually, we were both working in the development sector. Okay. My wife's from the Philippines. She's an educator. And of course, in our travels, we were working with our son, teaching him at home, trying our best to learn what it meant to raise a deaf child. These were the days before the internet, mind you. It wasn't easy to get a lot of clarity or quality information. And you were living in Karachi?
No. We started this small work with deaf children in the Philippines because our son was deaf, and we started a small little sort of project in the neighborhood. Someone who was a colleague of ours wrote us a letter. Again, this was before email. Maybe some of our listeners can't relate to that, but there was a day when there was no email. Okay. And they said, look, we're here in India. There's so many deaf kids everywhere we look. You guys should come here. So we were young and adventurous. We said, let's go. And we went and spent a few years in India, and we actually started clubs for teenage deaf youth because they all wanted to learn English. They wanted to, just gain some experience. And on the weekends, we would have these clubs. It wasn't a formal situation at all. Well, while in India, again, we received a letter from someone who was in Karachi, said, look, you guys are in Delhi right now. Can you come and help me for a few months? It was just a short trip. We said, chalo, let's go. And while we were here in Karachi, and this was in 1989, a business friend that we had met, Mr. Abdul Razak, he was a Memon architect. He said, look, I have an office in Sadr. I'm not doing anything with it. I'd like to give it to you. Do something constructive. And at that time, our son had a lot of teenage friends who were deaf. And they all wanted to learn English. They wanted to get a job. They needed help. Education, sadly, for deaf children in Pakistan There was no concept not very existent. So we took that office space in Sadr. It was at Regal Cinema Chowk, up on the 5th floor of the Regal Trade Square building. And in the summer of 1989, and the lift never worked. We can feel the heat. We can feel the heat right now. I'm just sweating even thinking of it. The lift never worked, and the walls as you ascended were all palm stained. You can picture that, right? But we took that little office and made it sort of a little heavenly place. We put some plants, we painted it, we set it up. And we started a small tuition center there for deaf youth. And we called it Deaf Reach. So this was our first, baby, if you will, my wife and I and my son and his younger brother. And back then we had around 15 or 20 deaf teenagers coming on a daily basis. And some parents came to us, oh, sir, hamare bache deaf kya kare? I said, Mehrbani, just bring them, we'll do something. We can't, it's hard to say no, right? Oh, sir, we live in Baldia town. I said, oh okay. I'll find somebody to provide transportation. We found a donor. He sponsored a small van. And so now we had 2 classes. We had a small group of kids who were 6 years to 9 years of age. They would leave and the teenagers would come. And that was our very humble beginnings, if you will. Long story short, fast forward 35 years. And from those small beginnings, this has grown to where we now have 8 full-time schools in 8 different cities across Pakistan. Our school starts at a pre-primary grade, kindergarten, all the way up through a college program. As you had mentioned, we have a BA program, which is one of the few that exists for deaf children in Pakistan. And inshallah, next year, we're starting a 4-year MA program. Wow. Which will be the first. Which will be the first? Keeping in mind that all the schools for the deaf in Pakistan are pretty much provincially run by the provincial governments. There's a few private schools in Karachi, Lahore, Islamabad, but the government schools only go up to grade 8. So deaf children don't really have that opportunity to get a higher education. And sadly, the quality of education is not all that great. So, but for that, you need to, create a special educational system for that. Yeah. You need to create special syllabus for that. And I'm going back 35 years, that when you started this off, did you have this vision in mind that I'm going to change all that? I'm going to start my own PSL. Yeah, well, we didn't plan this, This kind of just grew very organically. We found as more children kept coming, and
we could never know. Being parents of a deaf child ourselves, we definitely is with those parents and their families. We knew the challenges they faced. You know, deaf children in Pakistan are highly marginalized. You know, if we compare it to the West, which is often not a fair comparison, but, you know, in countries where there is more of an inclusive sort of mindset, and the political systems are set up where the government can manage that, deaf children not only have the right to education, but they have Access to education. Whereas in Pakistan, the rights are there, and it's just that access is challenging. You know, it's hard enough for mainstream children. There's so many children out of school, right? So I think this is a solution in places like Pakistan and the global South to have this public-private partnership where there's talented, you know, smaller teams that can partner with the government in order to get things done. And in a way, 4 of our school buildings have been given to us on a no-cost basis by the government, by Sindh government, by Punjab government, and now we have a new school coming up in KPK in Nowshera that's been given to us by the KP government. So I think that's a real success story, you know, in that regard. That surely is, and I'm going to ask you a very particular question, which I think everybody who's probably watching you for the first time would be having in his or her mind, that why would somebody, you know, would be living in Karachi back in the 80s and the 90s, when Karachi wasn't, you know, that hospitable for many people coming in from abroad, and running a school with so many challenges on board. What was the motivation that made you kept going? Well, maybe hum thoda sa pagal hain. You need to be crazy about something, but you have right? to be a little bit crazy to get it. That's how the world gets changed, right? That's how Elon Musk says it, right? Yes. But as I mentioned, you know what, we had started this, and yes, there was huge challenges. I mean, this was at the time daily strikes were going on. I remember getting caught out on the road and people taking me inside and throwing their shutters down and say, "Goodness, sir, bete, chai piye. Don't go out now." This was, you know, during 9/11 and the Gulf War, and so many challenges. I would just put on shawar kameez and tell everybody I was a Pathan. You know? So that's how you diffuse yourself. I'm from Canada, you know. But you know, we just kept going because the need was there, and we had started something, and it's like having children. How can you say Allah Hafiz? You know, and I'm glad we stuck. You know, I have to give credit to Pakistan. I mean, we've lived in many countries, but Pakistan is the most hospitable, the most supportive. You know, it's a truly generous population, in spite of the challenges, in spite of the problems, you know. In spite of the challenges and the problems. So, ख़वातीन हज़रात, आप सुन रहे थे रिचर्ड गेरी को, और उन्होंने अपने सफ़र के बारे में बताया. आप लोगों ने बस घबराना नहीं है. आप लोगों ने अपने सामने स्क्रीन पे देखना, आपके सामने कुछ पट्टियाँ चल रही हैं. इन पट्टियों को ज़रूर देखिएगा. साथ में देखिएगा हमारे पास कुछ जनरस डोनेशंस भी आ रहे हैं. हम उनके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं इस दौरान. साथ ही हम नताशा सैयद साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने एक बड़ा जनरस डोनेशन दिया है इस हवाले से. आप हमें कॉल कर सकते हैं एट 9175658801. वो तमाम अफराद जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं हम अपनी स्क्रीन्स पे, प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए. काजी हबीब साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन करके डोनेशन दिया है. याद रखिए, ये बात हम उस तबके की, उन बच्चों की कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में, जैसे रिचर्ड ने बताया, इंतहाई मार्जिनलाइज्ड हैं, और एक बड़े तवील अरसे से 35 साल से ये इदारा इन बच्चों की खिदमत कर रहा है. साथ ही मेरे पास कान में आवाज़ आई है, जुनैद सिद्दीकी साहब का भी शुक्रिया अदा करते चलें, जिन्होंने एक माशाल्लाह हमें एक बड़ा मुनासिब सा, बड़ा हमारे लिए काफ़ी है, और ज़रूर यकीन करते हैं हमारे जो इस वक्त यहाँ पे बच्चे मुंतज़र हैं इस इमदाद के, वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे. उनकी तरफ से एक इस नजराने का बहुत बहुत शुक्रिया. ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये इदारा मुकम्मल तौर पे शरिया कंप्लाइंट है.
इस इदारे के अंदर आपकी ज़कात, आपके जो भी सदक़ात अतियात हैं उनके लिए एक बाज़ाब्ता सिस्टम मौजूद है, फतवा मौजूद है। और मेरे साथ ख़वातीन और हज़रात मुझे कनाडा से ज्वाइन करें मेरे बड़े प्यारे और हर दिल अज़ीज़ दोस्त, हमारे कनाडा के नाज़रीन उनसे पहले ही बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और उनके अंदाज़े बयां के कायल हैं और उनकी गुफ्तगू के दिलदादा हैं। ख़वातीन और हज़रात, मोहम्मद अवैस इकबाल साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। सलाम। सो क्या कहना चाहेंगे अवैस भाई, हाउ वर यू फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू डेफ रीच? क्या सफ़र रहा आपका, क्या देखा आपने, कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को। नॉर्थ अमेरिका का गुडविल एम्बेसडर बना दिया। और उस पूरे सफर में तो बिल्कुल। सबसे बड़ा किरदार जो है वो इन बच्चों का सबका है। वो अल्लाह का खास फजल है कि जब से इनके साथ जुड़ा हूँ तो जो है वो दिन ब दिन अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ अता फरमाया है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ द एंटायर डेफ रीच स्टोरी एंड टीम। क्या बात है। और आपको एक तो अंदाज़े बयां भी इतना मुनासिब और इतनी आप प्यारी बात करते हैं ना, वैसे बंदे का दिल चाहता है ज़रा ज़्यादा सुनते रहें आपको। कुछ अर्सा पहले जब हमारी मुलाकात भी हुई और जब मैं भी डेफ रीच से पहली दफ़ा मुतारफ़ हुआ, ये वो दिन थे कि जब ह्यूमैनिटी के मेम्बरान को आप लेके आए यहाँ पे कनाडा से और आपने उनको डेफ रीच से इंट्रोड्यूस कराया। कुछ बताइए कि उन लोगों का क्या इम्प्रेशन था डेफ रीच के हवाले से और आपने उनके रिएक्शंस को देख के क्या देखा? देखिए शिफात भाई, बात यह है कि जिस जिस पाकिस्तानी तक या नॉन पाकिस्तानी तक जहां कहीं भी वो रहता है, अगर रीच की स्टोरी नहीं पहुंची तो वो बेचारा मजबूर है। लेकिन जिस 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 तक डेफ रीच की स्टोरी पहुंच गई, कान के जरिए, आंखों के जरिए, जबान के जरिए, तो वो डेफ रीच की स्टोरी का हिस्सा बने बगैर रह नहीं सकता। यानी बात ऐसी कि पिछले 1 डेढ़ सालों में कनाडा में हम कोई फंडरेजर नहीं कर सके, लेकिन इस रमजान में मुझे कम्युनिटी के कई मेंबर ने पूछा यहाँ पे कनाडा में कि जी डेफ रीच का इवेंट कब होने वाला है। तो वंस पीपल हियर दिस स्टोरी, इट्स वेरी नियर एंड डियर टू देम। सेम थिंग हैपेंड टू ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी की जो लीडरशिप टीम थी, रिचर्ड साहब से कनाडा में उनकी मुलाकात भी हुई थी। बट लेकिन वो कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। जैसे अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप हमारे साथ जब आए उस डेलीगेशन में, और आपने जब अपनी आंखों से देखा, तो आज जब सैयद शफात अली जब इस सोफे पर बैठे हैं, और मैं चूंकि बोलने की मुझे जो है वो ख्वाहिश भी है और शौक भी है सीखने का भी। जब मैं सुन रहा था शफात साहब का इंट्रो, जब मैं सुन रहा था, तो लफ्ज बलफ्ज मैं उसको एंजॉय कर रहा था कि ये एक वो शख्स नहीं बैठा कि जिसको थोड़ी देर पहले स्क्रिप्ट दिया गया है कि आए और आके डेफ रीच के बारे में बोल दें। ये वो शख्स बैठा हुआ है कि जिसने अपनी आंखों से, ठीक है, अपने हर जो है ना उस हवाले से डेफ रीच का पूरा मुआयना किया और देखा, और अपने दिल से, प्यार से, बेशक, मोहब्बत से उन बच्चों की आवाज बन रहे थे। बेशक, बेशक, अनडाउटेडली इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल डेफ रीच एक ऐसा एक्सपीरियंस है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर किसी इंसान ने ना कभी कभी माल्टा नहीं खाया, किसी ने कीनू नहीं खाया, तो आप उसे क्या समझाएंगे कि इसका जायका कैसा है? आप क्या समझाएंगे? तो आपको अगर एक दफ़ा डेफरीच का काम देखना है तो आपको डेफरीच आना पड़ेगा, आपको ये माल्टा चखना पड़ेगा, तो तब जाके अंदाज़ा होगा कि ये कितना मुनफरिद काम है और ये किस तबके को एड्रेस कर रहे हैं और कितनी खूबसूरती से कर रहे हैं। रिचर्ड की बातें सुन के भी एक हल्की सी झुरझुरी आती है कि क्यों एक आदमी कनाडा में अपनी
पुरसकून ज़िंदगी छोड़ के कराची में आए, और कराची में उस दौर के हालात में, जबकि कराची वो सब हॉट स्पॉट। मैं बहुत सारी चीज़ों का अब चूंकि वो दौर गुजर गया है, लेकिन अब वो जिक्र करना मुनासिब नहीं है कि हर किस्म का जो धंधा था वो उस वक्त कराची में उरूज पे था, और कराची अपने बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ जा रहा था। उस दौर में एक आदमी आके सिर्फ इंसानियत की खातिर यहाँ पे बैठता है तो एक झुरझुरी सी आती है रिचर्ड के काम को देख के। मुझे थोड़ा सा इस हवाले से ये बताइएगा कि अब नॉर्थ अमेरिका में आप एज एन एम्बेसडर ऑफ डेफ रीच, जब डेफ रीच का काम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो लोगों का पहला रिस्पॉन्स क्या है? वो क्या चाहते हैं डेफ रीच से कि डेफ रीच ऐसा क्या करे कि जिसके ज़रिए मज़ीद लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी जो नेचर है खास तौर पे पाकिस्तानियों की, अनफॉर्चुनेटली, कि हम जो है वो हर चीज का आगाज डिनाइल से करते हैं। जब उन तक की बात पहुंचाई जाती है कि डेफ रीच एक इदारा है, रिचर्ड, हाइडी और इनकी टीम अमेरिका से, कनाडा से, जब हम पाकिस्तान छोड़ के आला तालीम और अपना करियर बनाने के लिए लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क के बारे में सोच रहे थे, तो ये अपना करियर और अपनी जिंदगी छोड़ के पाकिस्तान और क्या बात है। पाकिस्तानियों के बारे में सोच रहे थे। तो जब इनको ये स्टोरी बताई जाती है, समझाई जाती है, तो पहले तो उनको यकीन नहीं आता, क्योंकि शायद हम कभी भी कोई काम बगैर नफे के करते नहीं है, तो ये सोचते हैं कि अगला शख्स भी बगैर नफे के क्यों करेगा। फिर उनको जब विजुअली इस चीज को दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है, और यकीनन चूंकि मुझे और आपको और बहुत सारे लोगों को रिचर्ड और इन लोगों के करीब रहने का मौका मिला है, तो जब मैं खुद करीब से देखता हूँ कि हम मुसलमान होकर तवक्कल की बात करते हैं, तो तवक्कल की असल झलक मुझे इनमें नजर आती है कि क्या जब भी बात है। किसी प्रोजेक्ट के ऊपर एम्बार्क करते हैं, तो ये परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने टाइम आफ्टर टाइम, सदर से लेके आज तक टाइम आफ्टर टाइम उन्होंने देखा है कि कहीं से अल्लाह की मदद आ जाती है, किसी इंसान की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, किसी और शक्ल में, और इनका काम रुकता नहीं है। तो हम जो है वो नॉर्थ अमेरिका में, जो इस वक्त भी हमारे नाजरीन जो सुन रहे हैं, उन सबके लिए पैगाम ये कि देखिए, आप शायद हर कोई डेफिनेटली जाके देख नहीं सकेगा, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं आप कि हमारी वेबसाइट पे जाके थोड़ा सा जाने। शफात साहब मौजूद हैं, मैं खुद मौजूद हूँ, और बहुत सारे लोग रेफरी होके जा चुके हैं। शफात साहब, लोग पूछते हैं कि कितने बच्चों को स्पॉन्सर करें, और मेरा उनको जवाब ये होता है कि एटलीस्ट उतने करें कि जितने आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए। तो क्या अगर बात है। आपको अल्लाह ने 3 बच्चों से नवाजा है, 4 बच्चों से नवाजा है, तो क्यों नहीं आगे बढ़ के इस माह मुबारक में अपनी ज़कात से, अपने एहतियात से इन बच्चों को, कि जो हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली जो है वो यूजलेस शुमार किए जाते हैं, अफसोस के साथ, ये बच्चे डिसेबल्ड नहीं है। और ये सेहरा डेफिनेट हो जाता है कि इन्होंने हमें ये बात समझाई कि ये डिसेबल्ड नहीं है, दे आर दे नॉट ओनली डिसेबल्ड, दे आर स्पीक स्पेशली डिफरेंट एबल्ड। लैंग्वेज, स्पेशली दे एबल्ड। ओनली, या फर्क सिर्फ ये है कि ये लैंग्वेज डिफरेंट बोलते हैं, बाकी तमाम क्वालिटीज इनके पास मौजूद है। तो मैं समझता हूँ दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि ना सिर्फ आप एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि आप उस एरिया ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि जहां पे ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाते। तो सोचिए कि इसका सवाब भी अल्लाह तबारक व तआला की नजदीक जो है वो कितने गुना होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेरे साथ रहिएगा वैस भाई। इस दौरान आई वुड लाइक टू थैंक तारिक नबी एंड नसीम शेख साहब फॉर देयर जनरस डोनेशंस। हमारी फ़ोन लाइन्स आर ओपन, यू कैन जस्ट जॉइन इन एंड यू कैन pledge your donations online, and also you can visit our website, और वेबसाइट पे भी आप जाके ये हमारे donations देख सकते हैं। Richard, I think you understood probably most of it. If not, you tried to. No, I understand mostly. You understand mostly लेकिन well. उर्दू मेरे अच्छी नहीं है. Let's It's just keep absolutely it in fine. English, please. It's absolutely fine. It's absolutely fine. जावेद शेख साहब भी हमारे साथ अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले Richard, every person I've met in Karachi or online, there are many organizations I've worked with, and many organizations I still, interact with. No, I haven't found even one person, Awais, एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला who hasn't talked nothing but just goodness about Richard and his work. हर बंदा is about, चाहे वो अली अल्लाह वाला हो KDSP के, चाहे वो डॉक्टर एसर हो चाइल्ड लाइफ के, डॉक्टर बारी हो इंडस हॉस्पिटल के, एवरीबॉडी आई हैव मेट, वो सिर्फ रिचर्ड की पर्सनालिटी की, हुम्बलनेस की, उनके काम की सिर्फ तारीफ करते हैं। मुझे एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला कि जो रिचर्ड के बारे में कोई दूसरी राय रखता हो। आपको कोई ऐसा बंदा मिला? नहीं नहीं, मैं तो कहूंगा ऐसे बंदे को आप तलाश भी ना करें, क्योंकि आपका वक्त जाया होगा, क्योंकि मिलेगा ही Well, नहीं। thank you. I'm very honored. I don't know that I always deserve that, but I have to also give credit to just the reception.
I've been here a long time, but we're still guests in this country. And we feel we've been treated, with great respect. And I want to return that, in my own humble way. Whatever service we can provide that makes a difference in the lives of these children and their families. Ultimately, we're changing the lives of communities across Pakistan. Richard, when you say that you're a guest in this country, well, in one way, you're being humble and, you're being polite. But in another way, for me, it's like, he's not a guest. He's one of us. He's actually one of the... Shukriya. So absolutely, this is true. Yeah. So, Khalid Mirza Sahab ka bhi is dauran hum shukriya ada karte hain. Thank you so much for your donations of $2,500 from South Florida. From South Florida. So, thank you so much. And I'm joined by Javed Sheikh Sahab. Javed Sheikh Sahab, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा जावेद शेख साहब को स्क्रीन पे लीजिए। अच्छा, उनके आने में कुछ वक्त बाकी है। चलिए, हमें तकनीकी कुछ मामला हैं, कुछ टेक्निकल है, तो उसको ज़रा मैनेज करते हैं। इस दौरान हमें मज़ीद आप लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, हमें मज़ीद लोगों की जो है वो ईमेल्स आ रही हैं साथ में, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करते रहिएगा। हम लोग लाइव हैं इस वक्त यूट्यूब और फेसबुक पे, तो आप हमें वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो डेफरीज से मुतालिक ज़रूर पूछिएगा। जावेद शेख साहब आपसे कुछ दिन पहले यहाँ तशरीफ़ लाए थे डेफरीज में, इस स्कूल में। तो इस स्कूल में आए तो उन्होंने यहाँ पे आके मैं तो वही कहता हूँ, माल्टा किसी ने खाया नहीं, तो जब किसी ने खाया नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसका जायका कैसा। तो हमने जावेद शेख साहब को ये माल्टा आखिर खिला दिया। हमने उन्हें इस इदारे का एक जो है ना एक जायका दिया। क्या रिएक्शन थे उनके, ज़रा आइए देखिए। मेरा नाम जावेद शेख है और आज मैं आपसे कुछ ख़ास बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो कि ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं, और बहुत दुख की बात है कि इनमें से 90% से भी ज़्यादा बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। आज मैं एक ऐसे ख़ास इदारे में खड़ा हूँ जिसका नाम है डेफरीज। डेफरीज का ये ख्वाब है कि पाकिस्तान के तमाम डेफ बच्चों को बेहतरीन तालीम मैसर हो, और ये पिछले 30 सालों से इस ख्वाब को ताबीर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी बारी है कि हम डेफरीज को सपोर्ट करें ताकि वो पूरे पाकिस्तान के डेफ बच्चों के ख्वाबों को परवान चढ़ा सकें। इस रमज़ान मेरी आपसे गुजारिश है कि डेफरीज को अपने एहतियात और ज़कात दे और हज़ारों डेफ बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाएं। मेरा नाम जावेद शेख है और आज मैं आपसे कुछ ख़ास बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो कि ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं, और बहुत दुख की बात है कि इनमें से 90% से भी ज़्यादा बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। आज मैं एक ऐसे ख़ास इदारे में खड़ा हूँ जिसका नाम है डेफरीज। डेफरीज का ये ख्वाब है कि पाकिस्तान के तमाम डेफ बच्चों को बेहतरीन तालीम मैसर हो, और ये पिछले 30 सालों से इस ख्वाब को ताबीर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी बारी है कि हम डेफरीज को सपोर्ट करें ताकि वो पूरे पाकिस्तान के डेफ बच्चों के ख्वाबों को परवान चढ़ा सकें। इस रमज़ान मेरी आपसे गुजारिश है कि डेफरीज को अपने एहतियात और ज़कात दे और हज़ारों डेफ बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाएं। जी, तो नाजरीन आपने देखा कि जावेद शेख साहब ने जब अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो उनका क्या रिएक्शन था। ख़वातीन हज़रात, वी आर ऑनर्ड एंड हम्बल्ड कि वी आर जॉइंड बाय एक ऐसे पर्सनैलिटी जो कि बॉलीवुड में
जब भी रणबीर कपूर के अब्बा बने हैं उसको प्रॉब्लम्स आए हैं जिंदगी में, लेकिन वो हमारे एक इंतहाई लेजेंडरी और बहुत बड़े सुपरस्टार है। ख़वातीन और हज़रात, जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू शबाज? सर मैं बहुत ही अच्छा हूं और आपको देख के मजीद एक्साइटेड हूं, मजीद खुश हूं। सर पहले तो ये माशाल्लाह। बताइएगा कि आपका मैं पहले आई जस्ट वांटेड टू से हेलो टू मिस्टर रिचर्ड। Assalamu alaikum, Javed Saab. Thank you for joining अस्सलाम। us. यस यस यस, So, प्लीज so कैरी ऑन। Javed bhai, I just want to ask about your experience. आप आए, आपने देखा, you saw Deaf Reach, you interacted with the children over here. What was your यार मैं impression? भाई मैं बता नहीं सकता भाई, मैं तो आई वॉज शॉक्ड, रियली शॉक्ड कि एक बंदा आज से 30 साल पहले यहाँ आया और वो यहाँ का होके रह गया, किसी दूसरे मुल्क का था मगर यहाँ का होकर रह गया। और यहाँ के जो सबसे बड़ा मसला था जिसकी तरफ हमारी हुकूमत तक नहीं देख रही थी, इस बंदे के दिल में अल्लाह ताला ने कुछ पैदा किया कि भाई ये मैं तुम्हें काम सौंप रहा हूँ, ये किसी और के जिम्मे भी आ सकता था मगर एक बंदा अमेरिका से चलता है और वो यहाँ पर आके ये क्योंकि इसकी यार उनकी फैमिली में भी सिलसिला था, उनके जी बेटे वो थे इसमें। तो बहरहाल मकसद कहने का ये है कि अपना अपना मुल्क छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के दूसरे मुल्क में आके इतना बड़ा इदारा बनाना, मैं तो इदारा देख के खुदा की कसम मुझे तो अभी तक अभी तक होश नहीं आया कि माशाल्लाह रिचर्ड ने जो चीजें की हुई हैं, जो चीजें की हुई हैं, इट इज अनबिलीवेबल। ये भी कल 23 मार्च था, अगर मेरे बस में होता तो मैं 2-4 तख्मे रिचर्ड को खुद अपने हाथों से लगाता। यू नो, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ यू सी एवरीथिंग। सो यार क्योंकि जो चीजें हमने देखी है, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, और बच्चे वो हुनरमंदी का काम करते हैं। और फिर ऊपर से कमाल ये है कि यार ये बच्चों को लेकर आते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनका खाना पीना, हमने तो देखा उस वक्त लंच टाइम हो गया था तो बच्चों को, और किचन में भी गया हूँ, साफ सुथरा किचन, जैसे कोई पीसी का किचन था, वो वैसा लग रहा था और वहाँ खाने बन रहे थे और वो बच्चों के लिए वहाँ सारा कुछ इंतजाम था। और वो बच्चे भी देखे जो वहां पर पढ़ के बाद में वो खुद उस्ताद बन गए और उसमें वो शामिल थे। ये दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और फिर वो बच्चे बैग भी बना रहे हैं बच्चे, चादरें भी, वो उसका डिजाइनिंग का भी काम कर रहे हैं। मैं तो वहां से वो लेकर आया हूँ, मैंने वो क्या कहते हैं, कुशन कवर, कुशन लेकर आया हूँ जो बच्चों ने बनाया। एब्सोल्युटली अमेजिंग, अमेजिंग जॉब यार। बस मैं तो बस मेरे पास अल्फाज नहीं है। और आई एम विद रिचर्ड एंड हिज टीम कि जब भी मुझे जहां बुलाएंगे आई एम देयर, यू नो। और मैं जो इस वक्त लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा, आई मीन एक तो अभी मैं इस वक्त जूम पे बैठा हूं और सुन रहे हैं जो भी है, अपना बढ़ चढ़ कर डेफ रीच को आप अपने एहतियात दीजिए, अपने ज़कात दीजिए। ये ऐसी जगह जा रहा है जिसकी तरफ हमारी हुकूमत का ख्याल नहीं किया। ऐसा काम मेरा मतलब है कि डेफ बच्चों को सिखाना और पढ़ाना ये बहुत मुश्किल काम है। और फिर ऊपर से फिर जो सारी चीजें जिंदगी की जो दूसरी लवाजमात है, वो खेल भी रहे हैं, वो कूद भी रहे हैं, वो मैंने ये भी देखा है कि मुझे रिचर्ड ने भी बताया कि जो बच्चे कम्युनिकेशन यहाँ पर आकर करते हैं वो अपने घर में नहीं करते। उनके उनके जो जो घर में वालिदैन हैं या बहन भाई हैं, वो उनके साथ साइन लैंग्वेज वो बड़ा मुश्किल है। तो वो यहाँ पर आके इतना खुश होते हैं, वरना तो बच्चे स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पर आके खुश होते हैं कि वहां यहाँ से जाने का उनको दिल नहीं करता। और फिर एट द जावेद भाई एंड ऑफ द इसमें यहाँ डे, मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, ये सारी बात में मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, हमारे जो देखने वाले हैं अगर वो $750 अ मंथ या $9,000 अ ईयर डोनेट कर दें तो वो एक पूरा क्लासरूम स्पॉन्सर कर सकते हैं 1 साल के लिए।
अल्लाह अकबर, ये कितनी अल्लाह आसान सी अकबर। बात हो गई। ओफ 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 ओफ, दिस इज, आई मीन, और स्पेशली जो आपने तो डॉलर में बोला है, और हमारे जो ओवरसीज डोनर्स हैं, उनके तो दिल इतने बड़े हैं माशाल्लाह। वो एक सेकंड में मेरा, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ये जब ये सेशन खत्म होगा तो कोई ना कोई बहुत बड़ी ऑफर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ आ जाएगी और वो पहुंच जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर नूर सभा साहिबा न्यूयॉर्क से, आदिल कमाल साहब न्यूयॉर्क से, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जनरस डोनेशन डेफ रीच के लिए दिया। नज़ीरा दाऊद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जनरस डोनेशन दिया। आप स्क्रीन पे नाम पढ़ भी सकते हैं, हमारे लाइव खुली हैं, और यहाँ पे अगेन आपको ये हम पहले कर चुके हैं, री एम्फसाइज करते हैं कि दिस इज़ 100% शरिया कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपकी दी हुई ज़कात आपके जो मुस्तहकीन बच्चे हैं जिनको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उन तक डायरेक्टली पहुंचती है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारे पास मुकम्मल जो है ना पेपर वर्क मौजूद है, और माशाल्लाह मुफ्ती इब्राहिम साहब जो है, मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब, जो कि पाकिस्तान में माशाल्लाह इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ में, बहुत सारे इदारों के साथ वो ऑन बोर्ड हैं। मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब इस इदारे के साथ भी इनके फाइनेंशियल मामलात के ऊपर ऑन बोर्ड हैं, और उन्हीं का ये डिज़ाइन किया हुआ मुकम्मल सिस्टम है। तो इसलिए मुकम्मल एतमाद के साथ आप यहाँ पे अपनी सदकात, खैरात, अतियात और ज़कात बिलखसूस, क्योंकि बहुत सारे लोग जावेद भाई रमज़ान में निकालते हैं ज़कात, अभी हम देख के आए हैं 2-3 घंटे पहले। तो बिल्कुल बिल्कुल, आपके, मैं चाहूँगा आप भी इस तरह की एक अपील कर दीजिए कि आसान हो जाए ना मामला। देखिए देखिए, मैं तो ये देखिए, इतना कुछ बोलने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये एक ऐसा इदारा है जिस, मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ, बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और ये जो अभी जूम पे हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं डेफ रीच की, बट इंडिविजुअली मैंने कहा ये पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है डेफ रीच का। बट मुझ मेरी अपनी जात के हवाले से अगर मैं कहीं चंद दोस्तों में अपने काम के जरिए के कई लोगों में उठता बैठता हूँ, तो मैं उनको 100% उनको बताता हूँ कि भाई इस तरह पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है, तो वो बात जो है वो आगे बढ़ रही है, वो आगे बढ़ रही है। इंडिविजुअली भी हम ये काम कर रहे हैं कि डेफ रीच जो है, वो रिचर्ड साहब ने जो यहाँ पर काम किया है, वो इट इज अमेजिंग। वो इनको तो अल्लाह ताला अजर देगा ही देगा, मगर वो जो जिनके बच्चे इस वक्त एक सही सिमत पर जा रहे हैं, वो उनकी उनके दिल से जो दुआएं निकलती होगी इस पूरे रिचर्ड के और रिचर्ड की फैमिली के लिए। उनकी वाइफ भी इतना ही एक्टिव है रिचर्ड की, जितना रिचर्ड साहब हैं या उनका बेटा या और जो लोग उससे मुंसलिक हैं। और वाकई ये इदारा ऐसा है जो मैंने जाके देखा है, आप खुल के दिल खोल कर इसमें अपने एहतियात दीजिए। ये एक ऐसे मुस्तहिक इदारे को जाएगा कि कल को जो आपका दिया हुआ पैसा है वो सही जगह पे जाके लगेगा, और उनसे जो बच्चे मुस्तफीज होंगे वो उनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी, ये आप अगर ये आप काम करेंगे तो ये अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर करेंगे, और ये आप अल्लाह ताला से बिजनेस करेंगे। क्या अल्लाह बात, मियाँ आपके काम में बरकत डालेगा। क्या बात। आप अगर शेख साहब, ये आपने बात कर दी, ये आपने बात कर दी बड़ी खूबसूरत सी, और मैंने ना इसी बात से एक और चीज़ पकड़ी कि 35 साल हो गए रिचर्ड भाई को यहाँ पे काम करते हुए, और रिचर्ड साहब इन 35 सालों में इन्होंने अपने आप को कहीं डिस्प्ले नहीं किया, कहीं पोस्टर बॉय नहीं बने, कोई मतलब बड़े हम्बल और पीछे रह के। और अभी भी ये ट्रांसमिशन शुरू होने लगी, रिचर्ड साहब की ये हालत थी जैसे मतलब अभी हम चांद पे जाने वाले हैं, पसीने आ रहे हैं, बड़े घबराए हुए थे ये। तो यहाँ पे मेरा और आपका काम आ गया है कि हमने इनका काम पूरी दुनिया तक इंशाल्लाह फैलाना है। इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे इनके बोर्ड के एक मेंबर हैं सईद हसन साहब, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑन कॉल, तो उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि कैसे उनका काम हम आगे बढ़ा सकते हैं। सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शफात, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। हाय रिचर्ड, हाय रिचर्ड। देखिए, यकीन माने आप जितनी बातें, जैसे आप लोग पाकिस्तान में आपने जाके डेफरी स्कूल को देखा और आपके ये तासुरात हैं, इमोशंस हैं, आप सोचिए यूनाइटेड स्टेट्स में
हम लोग रिसेंटली तकरीबन 11-12 सिटीज में गए और हर जगह पे ओवरसीज पाकिस्तानी का दिल अल्लाह ने कैसा बनाया है, पाकिस्तानियों का खासकर, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ रहते हुए भी वो पाकिस्तान से कितनी जल्दी जुड़ते हैं, मतलब ये हैरान कुन बात है। जिस शहर में गए हैं लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले, हमारे लिए बिठाया, इज्जत दी, और वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी खबर वहां से आए, कोई अच्छा काम हो रहा हो। मेरे ख्याल में दुनिया में हम बहुत ही एक बेहतरीन कौम है उस लिहाज से। तो ये बेशक इस लिहाज से तो जहाँ यहाँ जो काम हो रहा है अभी, मेरे ख्याल में जो रिचर्ड का मैसेज तो काफी अरसे से चल रहा है, लेकिन रिसेंटली इसके अंदर जो हमने रूप होंकी है, यहाँ पे इरफान बरनी साहब और हमारे अमीन मार्केटिया और इस तरह के और ऐसे दोस्त अहबाब जिनके साथ मिल के हमने एक कैंपेन चलाने की कोशिश की है, और उसका फायदा ये हुआ है कि जो घर तक डेफ रीच का ये जो मैसेज है ये पहुंच रहा है इस वक्त। और हर शहर में हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑन बोर्ड आएं, और ये जो कम से कम ये जो एक इशू है पाकिस्तान में डेफ बच्चों का, जिसके अंदर से ये एक निगलेक्टेड कम्युनिटी है, उनके लिए कुछ किया जा सके। तो हमारा पूरा हम वसूख से कह सकते हैं कि अमेरिका से डेफ रीच को एक खूब स्पॉन्सरशिप मिलेगी, लोग देना भी चाहते हैं, लोग दे रहे हैं और डेफ रीच को ट्रस्ट कर रहे हैं। Inshallah. Richard, I want to engage you on this a little bit. Huh. How many students or how many children in Pakistan are hearing impaired annually? So, do you have any data on that? I mean, I have some estimated data. Okay. Sadly, in Pakistan, as you may know, there really is no data is data. all about estimations. It doesn't in Pakistan, exist. absolutely. But there's an estimated over 1 million deaf children in Pakistan, okay, of school age. Okay. And hardly 5% have access to schools. So this is 5% of them have access. And it's so sad because deaf children are so capable of learning. If we look at the deaf community not as a disability group, but simply as a minority culture that speaks a different language, and if you can give them education and training in their language, sab cheez kar sakte hain. Absolutely. Right? So think of this. You're very intelligent. If I stuck you in a classroom in China, you would be lost. And this is what happens to a deaf child when they try to put him in a mainstream school. He can't understand what the teachers, he can't understand what his peers. He needs to be around peers that are speaking his language, which is sign language. Okay. And now, sign language is indigenous in every country. It's not universal. Pakistan has its own sign language. It's called PSL. It's not Pakistan Super League. It's Pakistan Sign Language. So when you go online, and you research PSL, you'll find our website, and it's got a dictionary that we created, the first ever digital dictionary in sign language for the whole country. It started with just 1,000 words, and it's grown to 6,000 words now. Wow. And this is available free of cost online. You know, families are using it, teachers are using it. Families in the UK and the US are using it to teach their kids Urdu. Wow. Because you get a picture of the sign, you know, a film of the sign, you get the Urdu, the English, and a voiceover. So you can use it for a lot more than just learning sign language. Wow. But coming back to that point about the number of deaf children, because so few children have access to education, there's such a challenge to provide literacy, numeracy, to make them empowered members of the community. But you can't even have education if you don't first have a language. And that's why we've worked really hard to create these digital learning resources in sign language so that the deaf can learn their language. That's quite a challenge, because not only we are talking about sponsoring these 8 schools, which we are running already, these 8 facilities, but it also tells us that there's so much margin and there's so much room for all the work to be done right now. Well, I mean, if we're talking about access to 1 million children. And if you look at the scope of it, our 8 schools are a drop in the bucket. It's an important drop, and we've created a model that works.
And it's a model that can be replicated, not even in Pakistan, even in other countries, because many countries in the global south face these same type of challenges. But as we look ahead to the future, our goal is to reach these 1 million children. We want to make literacy and learning accessible, that there's no child without access to literacy and learning in Pakistan. I want No to deaf ask you, child. we have emphasized and we have iterated quite a number of times that the children who are graduating from Deaf Reach, they are getting employed in different organizations. Do you have any number on that? So in the last few years, now we have an employment program that's not only for our own students, but we provide this service to the greater deaf community. There's so many young deaf people out there that never had the opportunity to really go to school, or maybe they only had some basic education. In the last few years, we've provided over 2,500 jobs. Wow. And this is, you Wow. know, in the textile industry, wow. pharma, KFC restaurants. They were the pioneer with us. You know, now there's deaf-run KFC branches across the country where when you go to order, you're one that's handicapped because you don't know how to order in sign language. So we made big picture menus so you could point. That's amazing. That's amazing. We've got young people working in so many facets, in banks. Now that we have a BA program, we're able to provide not just blue-collar jobs, but white-collar jobs. So we have young people placed in banks and working in offices. And the sky's the limit. This is just the beginning. शेख साहब, शफात भाई, मैं देख रहा हूँ, मैं आता हूँ वैसा आपकी तरफ, लेकिन शेख साहब, जी जी, मैं इस दौरान आपके जज्बात देख रहा हूँ और आप भी उसी तरह के शेल शॉक में जिस तरह मैं पहली बार डेफ रीच आके हो गया था. क्या कहिएगा? 2500 मुलाजमतें यहाँ से जो फारग तहसील है उनको मिल चुकी है. भाई मैं तो कह रहा हूँ कि बस ये कह रहे हैं कि कितने 5% अभी ये सपोर्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 5% ओनली. यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारी हुकूमत ने किसी इस तरफ तवज्जो, खैर वो तो हम जानते हैं कि बहुत से हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो सारे बर्बाद हैं इसी वजह से कि वहां पर कोई सीरियस इसको नहीं लेता. और ये एक बहुत सीरियस मसला है और इसमें जो बच्चे जो डेफ हैं उनको एक नई जिंदगी मिलती है डेफ रीच में आके. तो लिहाजा ये सोचना चाहिए कि वो बच्चे जो स्पेशल हैं और वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और ये अभी जो रिचर्ड ने कहा है कि वो बैंक में और केएफसी में बच्चे जाते हैं, बात सोचने वाली है. ये जो पब्लिक आउटलेट्स हैं जहाँ पे लोग आना जाना रहता है, तो उसमें ऐसा भी है कि कोई डेफ आया है, उसने ऑर्डर करना है, वो बेचारा कैसे करेगा अगर सामने वो बंदा सर्व करने वाला साइन लैंग्वेज जानता है, तो वो इजीली उसको कम्युनिकेट करके उसको वो चीज दे सकता है. दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. मैं एक मेरे जहन में बात आई है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार ये अभी तक डेफ रीच, मैं अभी जब मैं गया हूँ डेफ रीच तो मुझे तो जाके पता लगा, और मैं अभी तक उस यौ में हूँ, अभी तक शौक है मुझे कि यार ये इतना बड़ा इदारा, इतने काम माशाल्लाह रिचर्ड और उसकी फैमिली कर रहे हैं. इसका इसको वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए इतने सालों में. बट whatever he thinks, whatever he's doing, I think it is absolutely amazing, out of this world. And Richard, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप प्लान करें, जिस तरह अभी वो साहब कह रहे थे कि जी हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका दिल बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का नाम आता है तो वो दिल खोल के आगे आते हैं और वो हेल्प. तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा शफात के हम लोग पूरी एक यहाँ से 2-4-6 आदमियों की टीम लेकर जाएं और मुख्तलिफ अमेरिका के शहर में मुख्तलिफ जगहों पे हम डेफ रीच के लिए यस. हाँ रिचर्ड, इज इट ओके? Yeah, it's okay. We'll make a road trip of it. Yeah. And by the time you come back from America, I'm sure you'll be trying to open a new Deaf Reach Institute somewhere, inshallah.
Well, I want Inshallah. to teach everybody a sign. This is a sign for thank you. And this is how you clap in sign language, right? Because Oh, okay, deaf children okay. can't do this. So I want to say thank you, Javed. Bobo shukriya. Thank you, thank you, thank you. माशाल्लाह, माशाल्लाह. जावेद भाई अभी आपने जावेद भाई अभी आपने अभी अभी मैं वैसे भाई आता हूँ आपकी तरफ। जावेद भाई ने ना बात की कि ये इदारा इसको एक्सपैंड करने की, इसको आगे काम लाने की इसकी ज़रूरत है। हमने मेंशन किया, आपने भी अपनी जावेद भाई बात में मेंशन किया था कि लंच यहाँ पे ऐसा है कि जैसे 5 स्टार होटल में खाना सर्व हो रहा है और Yes, बड़ा ही साफ बिल्कुल, सुथरा। तो हमारे वो जो बिल्कुल, देखने yes. वाले नाजरीन हैं, जो क्योंकि लंच की सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है उन तमाम बच्चों के लिए जो कि यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डेफ रीच के किसी कैंपस में लंच स्पॉन्सर करना चाहें तो इट्स $1,300 अ मंथ और $15,000 अ ईयर। अगर आप ये कर दें तो आप डेफ रीच के कैंपसेस में If I might say something, Sure. the reason we provide lunch, keep in mind when we started this project, it started very small, and as we got more children, and we are providing pick and drop up to 60 kilometers. Every student gets picked from their home, brought to school, and back home again. But 99% of the children in our school, they're all from very poor families. So here in Karachi, for example, we're picking 75 children every day from Baldia town. Tinchar Korengi, Sait, Liari, Shah Faisal Colony. And if you go to Sakkar, we're amazing. picking children from Shikarpur, Khairpur, Panoakil, Pirjogu, Piarlo, sab jagah mein. And these children, because they come from very poor households, they can't bring food with them. And it's a long trip. Some children travel 1.5 hours just to come to school, then go home in the afternoon. So we started supplying this lunch program, and now it's turned into a whole culinary art program where we train the students, they help prepare the meals, they learn budgeting, they learn hygiene, they learn service. And this is done across all 8 schools. So on a daily basis, we're preparing over 2,000 lunches every day. every day 2000 lunch every 2,000 day. lunches every day. अच्छा Every day. शफात, Oh, simple Shafat. lunches, but still healthy. yes. शफात, मैं कह रहा हूँ कि आप जरा क्लैरिफाई कर दें कि आपने अभी कहा है कि $1,300 या $1,300 $1,300 a month a month, या okay, $15,000 a year. for 2,000 meal every day for 1 year. Yep. Is it like that? ये $15,000 is it for one campus or is it for like That covers one campus. one campus? $15,000 per year in a single campus. 8 campuses हैं तो इसकी कॉस्ट इससे कहीं ज्यादा हो जाती है। अगर 8 में इसी 15 को 8 से ज़रब देनी पड़ेगी तो Coffee इन 8 cost को है, cover हो लेकिन we get sometimes some food is donated, like chawal we get donated, atta we get donated. Okay. थोड़ा सा help करें Okay. तो you know. ओके ओके। और हमने जैसे उन्होंने वो बताया मैं कि इसलिए कह रहा था, जी। मैं जो डोनर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि हम ये पैसे दे रहे हैं तो इतने बच्चों को हम फीड कर रहे हैं, डेफ बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अवैस भाई आपकी तरफ आते हैं। आप बड़ी देर से ये सारा मामले का मुशाहिदा कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जावेद भाई ने बात की और रिचर्ड ने भी अभी ये बात की सस्टेनेबल मॉडल्स की कि सरकार को ये काम करना चाहिए। सरकार करती भी है, कभी कभी कोई स्कूल इनॉग्रेट कर भी दिया जाता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता। उसके अंदर रेड टेपिज्म होता है और बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, वो स्कूल्स चल नहीं पाते। इवेंचुअली वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोग्राम के तहत। लेकिन ये जो प्रोग्राम डेफ रीच में डिज़ाइन हुआ है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सस्टेनेबल प्रोग्राम है और रेप्लिकेटेबल है। आप इसे दुनिया के किसी भी शहर में और किसी भी मुल्क के भी किसी खित्ते में आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट इज़ कि हम इस प्रोग्राम को मजीद एक्सपैंड करें ताकि ये तमाम 10 लाख बच्चों तक जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एस्टिमेटेडली समाज से महरूम है, उन तक पहुंच सके? बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब देने से पहले आज मेरा आपके साथ रोल एज अ को होस्ट का था, लेकिन चूंकि आपका रोजा खुल चुका है और अच्छा है कि आप ज्यादा बोल रहे हैं और कनाडा अमेरिका में इस वक्त रोजा चल रहा है तो मुझे कम बोलना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपके सवाल से पहले वो लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन किया है, आज जो आप गुफ्तगू सुन रहे हैं डेफ रीच कराची कैंपस से ये डिजिटॉन रन हो रही है और आप कमाल गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन यकीनन ये आपके मुल्क से ये जो है वो फखरिया गुफ्तगू हो रही है जिसपे मैं और आप अमेरिका कनाडा में फख्र करते हैं। शफात भाई, जो आपने सवाल पूछा, जावेद शेख साहब ने जैसे अपने जज्बात का इजहार किया और अभी इन्होंने और आपने अपने जज्बात का इजहार सिर्फ कराची कैंपस को देख के किया है,
ठीक है। तो 7 मजीद कैंपसेस में मुझे तकरीबन तमाम कैंपसेस के विजिट करने का मौका मिला। जब मैंने कराची कैंपस विजिट किया 2017 में, तो फिर जब बारी आई हैदराबाद की, नवाबशाह की, राशिदाबाद की, सक्खर की, जेलम की, तो मैंने समझा कि अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कराची बड़ा शहर है और ये मेन कैंपस है। तो लेकिन जब मैं हैदराबाद पहुंचा तो स्पिरिट बड़ी हाई। राशिदाबाद जो है वो कराची से भी बड़ी स्टोरी है। तो यानी बताने का मकसद ये कि शायद हमारे जो लिसनर्स हैं इनको ये जानना होगा कि कराची से बाहर भी जो काम हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, क्योंकि शबाद भाई, हम जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में जब बात करते हैं इन इदारों के हवाले से, तो हम उनको ये बात कहते हैं कि इदारों को मजबूत करें और जो है वो साथ साथ अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को, मिसाल के तौर पर अगर आपके खानदान में डेफ बच्चे हैं तो उनको डेफ रीच का पता बताएं, उसमें कंजूसी मत करें, उनको पता बताएं। आप डेफ रीच को सपोर्ट करें, अपने खानदान वालों को, रिश्तेदारों को डेफ रीच का, मिसाल के तौर पर जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके पास चॉइस है कि वो डोनेट करें या हमें सिर्फ सुने, लेकिन एक चॉइस उनके पास और है कि वो लाइव जो फेसबुक है, यूट्यूब है, उसको कम से कम अल्लाह की खातिर शेयर तो कर सकते हैं। उसको बिल्कुल। शेयर ताकि ज्यादा लोगों तक पैगाम जाए। हम सब मिलके ये 8 इदारों से 18 का सफर, फिर 180 का सफर, और जिस तरह जो है वो रिचर्ड ने अपने बच्चों को इस इदारे में शामिल किया है कि लेगेसी कंटिन्यू रहे, तो इंशाल्लाह ये मिलियन बच्चे जो है वो वक्त दूर नहीं है कि डेफ रीच इंशाल्लाह उनमें से हर एक तक किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी फॉर्म में पहुंचेगा। और सॉरी, मेरा जवाब थोड़ा लंबा हो रहा है। आखिरी जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूंगा कि रिचर्ड और डेफ रीच की एक और खास बात यह है शफात भाई, क्योंकि डेफ बच्चों के लिए हर इलाके में स्कूल खुलना आसान काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि होती है। तो इन्होंने ये मॉडल भी जो है वो सामने पेश किया हुआ है उन बड़े बड़े स्कूल इदारों के साथ कि अगर आप अपने स्कूल में हमें एक कमरे ही दे तो हम वहां पे उस कैंपस में हम सबका आवाम तक जाना है। 20 कैंपस बहुत शानदार। Tell us the program of, school and getting a deaf reach outlet over there. We had some meetings. What's the future hold? Are we satisfied? Schools is, I mean, it's already a job. We really mandate, which we ourselves put as the trailer on our videos. It says, let's education for deaf children. And we had to sort of, are we doing that? And the short answer is no. There's so much more to be done. You know, it's like, it's thrilling when you come and you down and see how far you've come, but look up and see how far. It is very small. We don't financially, and it's not even financial. Human resources, lack of that can actually, you know, when you have a large school, it's so much human resources it requires. So what we're going to be doing is setting up satellite schools across the country where we'll utilize or we'll take hold of underutilized spaces in existing buildings, whether they're government or private sector, might be like with TCF or DIL or any other organization. And we will set up classrooms in those areas where deaf children can attend. And we've been working on creating digital learning content for each grade level, kindergarten, grade 1, grade 2, grade 3. Think Khan Academy for the deaf. So that we can equip a classroom with a large screen TV, similar to what you're seeing here. We'll put a computer unit there loaded with a hard drive with all this content and train a teacher how to use that content and lead the class. And ultimately, any location can have anywhere from 1 to 5 or 6 or 7 classrooms, depending on how many children are in that area. Now, we won't be providing transport, we won't be providing lunch.
It'll be sort of a deaf reach light, if you will. But in this way we Sort can... of a better version, yeah, right? we can, in this way we can reach these thousands and thousands of kids that are just everywhere. Now we've been piloting this. We're running... But they will be going in the same school? Yes. So, starting with the same children? yes, probably having the and same what that friends. does is, if it's already a running school, that creates an inclusive campus. Or if it's a standalone, maybe there's many deaf leaders out there that are passionate about wanting to train deaf children. They just don't have the setup. So by providing them these resources, providing furniture for a classroom, lights, fans, the basics, a solar panel that will run the lights and fans and the computer, for a very low cost, we can set up a satellite campus. It's roughly $25,000 sets up a satellite campus. And then 10 to 15,000 will run it for a year. That's inclusive the teacher's salary, the saman, the copybooks, subsidies, utilities. Everything. And we can literally establish hundreds of these across the country if we look ahead to the next 5 or 10 years. So this is where we're going. We've already piloted this. We've got 4 schools up and running now, 2 in Punjab, 2 here in Sindh, and we're even working with the Sindh government to set up these digital classrooms in their 65 special education centers. So I think this is a model that's going to, longer than the days I personally have left on. But if we can start something that others will take forward, it will be a job well accomplished. That's quite a story, and I think I need to take Saeed Hassan on this, and इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, and we have more guests in line as well. Do we have Saeed bhai as well with us? Yeah, Saeed bhai is with us. Saeed bhai, just now Richard has narrated all his vision and what he thinks about and where does he plan to take Deaf Reach in the coming year, and the most important line of it was that he wants to create, and he is actually creating a Khan Academy for deaf children. Khan Academy for children and students living in North America, they actually know the worth of it. What do you think about this statement, and how do you perceive it, and do you think that it actually communicates with the target donors, and does it actually create some buzz over it? Absolutely, absolutely. There's no doubt about it. I think the message of Deaf Reach schools in North America is already there. We just have to do a little bit push, and I think we can reach our goals very well. And we wanted to change the way things work. Okay, it's not going to be anymore the old ways, but we're looking for like sustainable models that will like continuously grow and expand, and we're looking at the scalability. Having said that, because our recent visits to different cities in the United States, what we learn is that I think if we reach out to more cities and get the message out, we'll reach our goals much faster. And this will help Richard definitely to expand in Pakistan and restructure also things that are because before he was working by himself. Now he has a big team in Pakistan and in overseas also and other countries. So I think this will definitely lead. So at this point, रमज़ान का महीना है और बाबरकत महीना है और सवाब का महीना है. हमारा फोकस ये है कि ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, जो लोग हमें सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे सोशल मीडिया के तवज्जुह से, कि ये महीना है जिसमें आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि इस पौधे की आबियारी जो है एक दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगी. वो दरख्त का हिस्सा बने आप. वो हम यहाँ इस दुनिया में हों या ना हों, लेकिन आपके वो कंट्रीब्यूशन, आपका वो जो डोनेशन है, वो आपके लिए इस दुनिया में और आखिरत में भी काम आएगा. ये है इसका असल मकसद आज के प्रोग्राम का. शॉर्ट टाइम है, बहुत लोग हैं, लेकिन जो मैसेजिंग हम आज करना चाह रहे हैं, खासकर हम जो यूएसए में बैठे हुए हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आपने तो पाकिस्तान में जाके इन स्कूल में देख के आपका दिल जो है बसीज हो गया. यहाँ के लोग सुन के रिचर्ड को वो तस्वीरें देख के, वो माएँ, वो बहनें, वो वालिदैन, वो अभी डॉक्टर राशिद चौधरी साहब को हमने लाहौर भिजवाया.
वापस आके अभी मेरे घर के वो जो एड्रेस के ऊपर मैंने देखा चेक आया हुआ $5,000 का। वो सिर्फ गए हैं, देख के आए हैं और वापस यहाँ लॉन्ग आइलैंड से रिचर्ड डॉक्टर रशीद चौधरी, he just sent a $5,000 check. Mashallah. बहुत शुक्रिया. Thank He you didn't so even much. speak to me. Thank He Dr. didn't even Saab. He speak. just recently visited our school in Lahore, so that's nice to hear. That's amazing. Right. So he That's didn't even amazing. speak to me. And because he said, Saeed, I'm on board. We're going to come with you. Mashallah. Dr. Qamar Zaman, he said, we're coming with you. That's amazing. And what I really like the most, the statement which you just gave, is that we need to expand, we need to go into the more cities, and we need to, tell people the story of Deaf Reach. That means you are absolutely sehmat with whatever Javed Shah Saab has just said. Road trip, and let's go on and let's That'll be reach more lovely. people. That'll be Javed lovely. Saab, I'll bring my guitar. yeah, sure. So Javed Saab, any last word, sir? उसके बाद फिर हम मजीद मेहमानों को शामिल करते हैं, सर. ठीक है, थैंक यू सर. बस आपके कुछ अल्फाज चाहिए हमें, ताकि हम इस जरा आपकी जरा जो आपका जो प्लान है वो तो ऑन बोर्ड हो गया सर. आपका प्लान है रोड शो का, वो अप्रूव हो गया. अब आगे बताएं सर, क्या प्लान है? नहीं, मुझे बड़ी खुशी की बात है। और अब जो सईद साहब बातें बता रहे हैं कि सिर्फ एक बंदा, वो जो डॉक्टर राशिद, उनका नाम ये ले रहे थे कि वो वहां पर गए, उन्होंने देखा और जाते साथ ही $5,000 जो है उनको भिजवा दिए। तो ये सिर्फ अप्रोच की बात है कि आपने कैसे लोगों को दिखाना है कि ये डेफ रीच क्या काम कर रहा है। वो मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई ये लोगों का दिल बाहर निकल आता है। और मैं तो मैं आपको बता नहीं सकता मेरी फीलिंग जो है कि भाई इस दौर में इस जगह पे रह के रिचर्ड जो काम कर रहा है, वो बस हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम रिचर्ड के साथ मिलकर इस इदारे को और बढ़ाएं और उसमें अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और परवरदिगार अपना करम करे। और ये बच्चे जो हैं, वो जो 1 मिलियन इस वक्त हैं, वो हम उस करते जाएं। रिचर्ड अपने इंस्टीट्यूट से उनको यानी कि उनको हुनर दे के, उनको सिखा के उनको इस दुनिया में भेजे, ताकि वो अपने आप को एलियन ना फील करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शेख साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर। आपकी प्रेजेंस जब भी होती है बड़ी बागो बहार होती है। अल्लाह आपको हंसता गाता रखे, सेहत और सलामती के साथ हमारे सरों पे सलामत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। थैंक यू रिचर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ख़वातीन और हज़रात, ये तो रहे हमारे साथ जावेद शेख साहब। और अवैस भाई, आपने जो यहाँ पे लोगों को टीके लगाने शुरू किए थे कि आओ मेरे साथ और डेफ रीच देखो, तो वो माशाल्लाह उनका असर बड़ा हुआ लोगों पे। मैं भी सक्खर से आ रहा था, तो एक शो था, शो के लिए गया हुआ था। वापसी पे वी हैड टू टेक अ डी टूर, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वी हैड टू पास थ्रू सजावल। तो सजावल में मैंने डेफ रीच का बोर्ड देखा, तो मैं 1 मिनट के लिए घबरा गया। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, और ये यहाँ भी पहुँच गए। तो क्योंकि सजावल का नाम उमूमन खबरों में कुछ दीगर मानों में आता है, तो जरा डेफ रीच के वाले से अच्छी खबरों में जरा कम आते हैं। और ये अच्छी खबर है कि डेफ रीच सजावल भी पहुंच चुका है और माशाल्लाह जारी है। बहरोज भाई, बहरोज सब्जवारी साहब, अब से कुछ दिन पहले सर तशरीफ लाए हमारे डेफ रीच में, और यहाँ पे आके उन्होंने क्या देखा, वैसे भाई आपकी और सैदा आपकी समातों की और बसारतों की नज़र करते हैं, ज़रा देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बहरोज सब्जवारी। आज मुझे डेफ रीच आने का मौका मिला और यहाँ जितने स्टूडेंट हैं, जितने बच्चे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बहरोज सब्जवारी। आज मुझे डेफ रीच आने का मौका मिला और यहाँ जितने स्टूडेंट हैं, जितने बच्चे हैं, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और उनसे मिलके मुझे बेहद खुशी हुई। जिस तरह का माहौल
इन बच्चों को यहाँ दिया जा रहा है, जिस तरह की स्किल्स इनको सिखाई जा रही हैं, जिस मेहनत से, और यकीन जानिए जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं वो यहीं से पढ़े हुए बच्चे हैं जो अब टीचर्स हैं। जबरदस्त काम कर रहा है डेफ रीच। बदकिस्मती से हमारे इस मुल्क में, इस प्यारे पाकिस्तान में डेफ बच्चों की स्कूलिंग के लिए, उनकी तरबियत के लिए कोई मौका ही नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं। और यकीन जानिए कम से कम 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको तालीम की, उनकी ब्रॉटअप की जरूरत है। और याद रखिए, इन तमाम बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। अमाउंट मेंशन ना करें। नो इट्स नॉट अ प्रेजेंट। जनाब, हम इस वक्त दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हैं और हमने आपको दिखाया जनाब के, मैंने अभी जैसे मेंशन किया था कि अवैस भाई जो हैं ये यहाँ पे आते हैं, लोगों को पकड़ते हैं और लोगों को कहते हैं आओ डेफरीच आओ, फिर वो डेफरीच आ जाते हैं, तो फिर लोग जो है उनके ऊपर डेफरीच का असर हो जाता है, और जब उनके ऊपर असर हो जाता है तो फिर वो उसके बाद जो है वो डेफरीच के काम के दीवाने हो जाते हैं। तो अवैस भाई ज़रा बताइएगा बहरोज भाई को लाने का तजर्बा कैसा रहा, क्या किया, कैसे आए वो, क्या तासुरात थे उनके? नहीं, ये क्रेडिट मैं नहीं लूंगा। ये तो इत्तेफाक था कि मैं डेफरीच में बैठा हुआ था, थोड़ा बहुत क्रेडिट मेरी जेब में आ ही जाएगा घूम घाम के। ये तो फैसल भाई और रिचर्ड की टीम का खासा है कि मैं वहां मौजूद था और मुझे पता लगा जी आज बहरोज सब्जारी साहब ने आने हैं। बहरोज भाई बहरहाल मेरी फारूक साहब से फिर भी मुलाकात उस दिन नहीं हुई, जिस पर फिर किसी और वक्त बात करेंगे। तो जब बहरोज सब्जारी साहब आए तो मुझे भी मौका मिला इनके साथ डेफरीच के कैंपस का एक मरतबा फिर एज अ गेस्ट, एज अ होस्ट रिचर्ड और पूरी टीम के साथ घूमने का। माशाल्लाह। असल में तजर्बा तो मैं बताऊंगा ना भाई। हाँ, अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम ख़वातीन व अस्सलाम। हज़रात, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब पेश खिदमत है वो शख्सियत जो कि पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पे गुज़िश्ता 50 सालों से बागो बहार बन के छाई हुई है। ख़वातीन व हज़रात, हमारे और आपके हर दिल अजीज जनाब बहरोज सब्ज़ारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू रिचर्ड? सब ठीक है। थैंक यू बेरोज फॉर जॉइनिंग अस, वी अप्रिशिएट इट। No, it's my honor and believe me, रिचर्ड, जो काम आप कर रहे हैं ना, मैंने जब अभी ये कोई महीना पहले, आई थिंक इट्स अ मंथ बिफोर, ऊपर नीचे जी, तो यकीन जानिए जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि माइंड ब्लोइंग इज द वर्ड। और जिस तरह से ये उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको लिखा रहे हैं, उनके लिए खाने बना रहे हैं, अमेजिंग रिचर्ड। अल्लाह ब्लेस यू फॉर दिस वर्क। और मेरी खुश नसीबी है कि मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा हूं कि मैं डेफ रीच का हिस्सा हूं और हिस्सा रहूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। So, Feroz bhai, you call yourself as a part of Deaf Reach now. Yes. What was that one thing which actually hit you so hard that now you call yourself as a part of Deaf Reach by just visiting them for a single time? मेरा पहला विजिट था, ठीक है खान साहब, और मुझे यानी उनमें जो जो सुनने वाले और जो बोलने वाले लोगों में वो चीज नहीं थी जो उन लोगों में थी। क्या बात। मैं इंस्पायर उसी से हुआ हूं। क्या कि बात। वो लोग, मैं कहता हूं उनकी क्या देखभाल इन्होंने की है, क्या ट्रेनिंग की है, कि वो सब ऐसे थे जैसे इतनी ओ माय गॉड, क्या वाइब्स थी। बस मैं क्या बताऊं यार, मैं बहुत इट वाज अमेजिंग। देखिए बेरोज़ भाई, ये इसको मैं समझता हूँ कि ये जो दिल के अंदर तूफान उठता है, इसको आवाज़ की कबा पहनाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन ये अमानत है आपके पास, जो आपने देखा ये अमानत है, तो इसको मुंतकिल करना अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो लोग देख रहे हैं, आपके चाहने वाले जो आपको देख रहे हैं, लाजिम है उनको बताइए, जो अल्फाज हो, साथ दे ना दे, लेकिन ज़रूर मुंतकिल कीजिएगा
कि क्या देखा आपने और किस तरह से ये बच्चों का आपके साथ इंटरेक्शन क्या रहा? अरे मेरा तो इंस्ट्रक्शन ये रहा कि मेरा नाम जो है वो ये और ये रिचर्ड इफ हाँ आई जी जी रिमेम्बर एंड दिस और आई बढ़िया थिंक दिया। क्योंकि the children you get a sign name. Yeah. Because if you have to spell your name every time, it's too long. Yeah. So एग्जैक्टली Beroz Sahab has a small mole here. So the यस children made his sign with a B. यस That's a B यस and Beroz. And Javed, because he has a chin that's a little bit वो twisted. So जावेद this, के तो ये खानदानी है ना हाँ अपना Javed ये के sign है. So Javed or Beroz. वाह वाह। नहीं और दूसरी बहुत सी चीजें थी यार। शफा तुमने विजिट किया? जी जी जी, मैं बल्कि अपने नाजरीन को बताते चले फेरोज भाई हाँ आपकी इस बात से जोड़ते हुए कि हम जो बात कर रहे हैं कि जी डेफ रीच ऐसा स्कूल है, वैसा स्कूल है, ऐसा काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है, हम इस वक्त डेफ रीच में बैठे हुए हैं। माशाल्लाह 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 ये कोई टीवी सेट नहीं है, ये डेफ रीच में मौजूद है, हम यही क्या के बात एक ओरिएंटेशन हॉल में मौजूद है। तो क्या ये बात। तो यहाँ बस इससे ज्यादा क्या कहें आप। और नहीं मैं चाहता हूं जितने मुखैर हजरात हैं जो दिल में दर्द रखते हैं, ये दिल के दर्द के बगैर हो नहीं सकता ये काम। हो नहीं सकता। और ये फीलिंग है जो औलाद वाले हैं, जो वही ये फील उनको एहसास हो सकता है कि अगर जो कोई सुन नहीं सकता, जो कोई बोल नहीं सकता, तो वो जिंदगी कैसे गुजारेगा। तो वो जिंदगी बेहतरीन गुजार सकता है डेफ रीच पे। बस मुझे तो यही समझ आई ये बात। और ये बहुत छोटे पैमाने पे रिचर्ड, इट्स वेरी स्मॉल योर सेटअप, इट शुड बी बिग। ये हाँ यस 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 और इंशाल्लाह होगा। आई गिव यू माय वर्ड्स, जो मुझसे हो सकेगा, जो मैं कर सकूंगा, मैं जरूर करूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरे अल्लाह से मेरा वादा है, क्योंकि ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ अल्लाह मियाँ से। आपको पता ही नहीं है, ये कहानी बहुत आगे की कहानी है। क्या ये बात शफात क्या को पता बात है। है, क्या बात है जी, क्या बात है। और अल्लाह से बिजनेस करने वाली बात है तो फिर यहाँ पे अमाउंट भी रख देते हैं ना कि इट्स यू नो दिस ऑल दिस गुडविल एंड वेलफेयर व्हिच वी डू, अल्लाह पाक सेज इन कुरान दैट दिस इज लाइक यू नो डूइंग बिजनेस विद हिम, and doing business with him is like somebody who has sowed a seed in a wet soil, and it sprouts into and it sprouts into a plant which has 7 clusters, and all these 7 clusters have got 70 seeds, so it's like 700 times, right? And and listen, every business has got loss, profit and loss, but in this business there is no loss. I can guarantee you, absolutely there is no loss. Absolutely. Profit. So, ladies and gentlemen, जो हमें देख रहे हैं, आपने देख ली बहरोज भाई के जो जज्बात हैं। अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं 100 स्टूडेंट्स को, 100 स्टूडेंट्स अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं एक साल के लिए, द अमाउंट इज $60,000 a year। अगर आप 100 स्टूडेंट एक माह के लिए स्पॉन्सर करना चाहते हैं, द अमाउंट इज $5,000 a month। अमाउंट जिस तरह की भी हो, दामे दरमे सुखने, हर तरह की अमाउंट वेलकम है। लेकिन ये बात जहन में रखिए, हम इसको इटरेट करते हैं एक दफा दोबारा भी, कि आपका दिया हुआ एक एक पैसा, एक एक पाई, यहाँ पर जो बिलखसूस ज़कात का महीना, बहुत सारे लोग ज़कात रमज़ान मुबारक में जो है वो अपने उस फरीज़े से फारिग होते हैं, तो आपकी ज़कात और अतियात का ये इदारा बेहतरीन तौर पर मुस्तहिक है। जी बहरोज भाई। अच्छा, ज़कात का हमेशा यही समझा जाता है कि रमजान आया है और ज़कात दें। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़कात सारे साल देनी चाहिए भाई। ये ज़कात तो रुकनी, अल्लाह मियाँ ने कभी हिसाब मांगा है तुमसे? मुझे बताओ कि अल्लाह मियाँ ने जितना तुम्हें दिया है कि जरा हिसाब तो दो। तो हम क्यों हिसाब कर रहे हैं भाई? ज़कात में तो हिसाब है ही नहीं। वाह 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 वाह। अमीन मकातिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहरोज भाई, अमीन मकातिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनको हम खुशामदीद कहते हैं। और अमीन भाई, जस्ट वन सिंपल क्वेश्चन जहां से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, हाउ वर यू फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू डेफ रीच, और इस वक्त आप डेफ रीच के सफर को लेके कहां पहुंचे?
एक्चुअली 2017 में फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था जब रिचर्ड ने हमारी लोकल कराची ऑफिस को कांटेक्ट किया था। तो कुछ स्कूल के टेक टूल्स बनाने थे, तो उसमें फिर हमारी ऑफिस इन्वॉल्व हुई थी। और रिचर्ड को जब पता लगा कि मैं यूएस में होता हूँ, तो फिर हमने डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारी हुई काफ़ी। और फिर 2018 में रिचर्ड आए थे डैलस, तो मैं डैलस में था, मुलाकात हुई थी, शॉर्ट बड़ी ब्रीफ मुलाकात थी। लेकिन 2021 में जिस तरह आपने कहा ना कि वो माल्टा का जो टेस्ट है, मैं पाकिस्तान पहुंचा तो वो अनबिलीवेबल था। मैं गया हाँ। फिर, और रिचर्ड चाह रहे थे कि यूएस में थोड़ी एक्सपोजर हमारी बढ़े, डेफरीज की बढ़े। तो मैं चूंकि काफ़ी सीरीज में मेरा फिजिकल प्रेजेंस रही यूएस में, तो मैं जब 2021 में गया तो मैं कहता चलूँ रिचर्ड अगर डेफरीज का फेस है तो हाइडी उसका हार्ट है। तो मैं हाइडी, चूंकि आई होप यूर लिसनिंग, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फॉर यू, टू यू। तो जब मैंने देखा, जो आप सब ने देखा, जो आप तो वहाँ बैठे हैं इस वक्त, तो जो मैंने फील किया इट वाज अनबिलीवेबल। तो मैंने कहा भाई फ़ौरन चलते हैं यूएस। और वहीं से हमने कुछ दो चार शहरों में कुछ अरेंजमेंट छोटा सा किया। हमारे जो हर शहर में बहुत ही, जिस तरह आपने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारे दोस्त हैं, बहुत ही बड़ा हार्ट है उनका। तो जहाँ गया सिर्फ मीट एंड ग्रीट हमने किया, रिचर्ड और हाइडी से मिलाया। फिर लास्ट ईयर कुछ और शहर ऐड किए। फिर इस साल जब आए थे ये फॉल में, तो हमने 5-6 शहर ऐड किए इंशाल्लाह। और हमारा गोल ये है कि 20-25 शहरों में डेफ रीच के फिजिकल प्रेजेंस हो जाए, चैप्टर्स बन जाएं। इस वक्त हम तकरीबन 14-15 शहरों में हैं यूएस के। और ये अब नाम मेंशन करना बहुत डिफिकल्ट है, हर शहर में इतने लोग हैं माशाल्लाह, इतने दोस्त हमारे हैं माशाल्लाह जिन्होंने माशाल्लाह। बहुत सपोर्ट किया है और अनबिलीवेबल हैं। और मैं बहरोज सबको पता है, या जावेद साहब बता रहे थे कुछ के गवर्नमेंट के स्कूल्स का सिलसिला वगैरह। डेफ रीच ने रिसेंटली ये सोचा कि भाई क्यों ना सैटेलाइट स्कूल खोले जाएं, ताकि बड़े स्कूल तो बनते हैं लेकिन सैटेलाइट स्कूल में हम ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकते हैं जल्दी। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने पायलट प्रोग्राम स्टैब्लिश किया। और लास्ट ट्रिप में ही बहुत से हमारे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका में, उन्होंने अडॉप्ट किए हैं स्कूल। तो मैं सिर्फ ये बात ज़्यादा मेंशन करना चाहता हूँ कि एक सैटेलाइट स्कूल जो है, जिस तरह रिचर्ड ने मेंशन किया कि 12-15 thousand डॉलर में स्कूल बन जाता है छोटा सा। हम किसी वाह। और स्कूल के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, उसमें एक दो दो चार रूम उनसे ले लेते हैं, तो चलता है। जो हमारे जो नॉर्मल बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और वो बच्चे जो सुन नहीं पाते, उन्हीं उसी स्कूल में उनका भी एक सेक्शन बन जाता है, ताकि वो 2-3 माइल रेडियस में जो रहने वाले बच्चे हैं वो आ सके वहाँ पे। क्योंकि हर बार इतना बड़ा कैंपस बनाना आसान नहीं है, 2.5-3 लाख डॉलर लगते हैं बड़ा कैंपस बनाने में, और उसके बाद फिर उसको चलाने में भी। क्योंकि स्पेशलिटी प्रोग्राम है ये, ऐसा तो नहीं कि कोई भी जाके टीचिंग कर सकेगा उसमें। तो उसमें जो आम स्कूल बड़े कैंपस चलाने का जो खर्चा है, उससे 10% में आप छोटा सैटेलाइट स्कूल चला सकते हैं, और ज़्यादा बच्चों को भी हम केटर जल्दी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमने ये प्रोग्राम, रिचर्ड और सारी टीम जो नॉर्थ अमेरिका की है, इरफान है, सईद हैं और हमारे बहुत से लोग हैं, तो ये डिसाइड किया कि क्यों ना सैटेलाइट स्कूल बने इंशाल्लाह। तो हम अपने तमाम डोनर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक छोटा सैटेलाइट स्कूल अडॉप्ट कर सकते हैं। सिर्फ हम्म। $13,000 जो है उसकी फर्स्ट टाइम सेटअप करने की कॉस्ट है, और फिर 12,000 ईयर, $12,000 साल की चलाने की कॉस्ट है। तो अगर $25,000 पहले साल कोई देता है, उसके बाद सिर्फ $12,000 भी सालाना देते हैं, तो वो एक स्कूल अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे स्कूल बना सकते हैं। तो उन्हें भी एक ओनरशिप नजर आएगी कि वो बच्चों को, और हर सैटेलाइट स्कूल में 50 से लेके 100 बच्चे तक पहुंच जाते हैं। तो एक रीजनल स्कूल होगा, आप मुझे अपने मुझे इलाके थोड़ा सा में, अपने बताइएगा, गांव। मुझे मुझे थोड़ा सा जी बताइएगा इस हवाले से कि आपने कहा जी कि अभी हम इस 8 स्कूल तो हमारे पास इन कैंपसेस ब्रिक एंड मोटर स्कूल्स मौजूद हैं, जी 14 कैंपसेस मजीद हो गए और आप इसको लेके मजीद एक्सपैंड करने जा रहे हैं। जी इस जी हवाले बिल्कुल। से और इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा मुझे, मैं चाहूँगा हमारे देखने वाले डेटा जानना चाहेंगे कि ये जो स्पॉन्सरिंग स्कूल वाला कॉन्सेप्ट है, ये एक बड़ा अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट है। बहुत जी सारे लिसनर्स ऐसे होंगे जो कि अपने मरहूमीन की बख्शिश के लिए उनके नाम से कोई एक सेंटर, कोई एक स्कूल डोनेट करना चाहेंगे। प्रोसेस क्या है, कितना वक्त लगता है इसमें? नहीं, स्कूल देखें। और दूसरी बात ये कहूँ, रिचर्ड और जो टीम है पाकिस्तान की, उन्होंने तमाम प्राइवेट और पब्लिक स्कूल से कांटेक्ट में हैं, और वो चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की स्कूल भी कुछ हमें मिलेंगे इंशाल्लाह, जिसमें वो जगह है मौजूद। और वहाँ वो चाहते हैं कि भाई ऐसे बच्चे जो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी क्लासेस हों। ऑब्वियसली वो थोड़ा शॉर्ट करिकुलम होगा, इतना एक्सटेंसिव नहीं होगा जो हमारी मेजर स्कूल, बड़ी स्कूल कैंपसेस हैं। तो उसमें जो है ये मेरे ख्याल में रिचर्ड इस बार जो आए थे अमेरिका, तो उनका प्लान था कि 50 स्कूल्स होंगे इंशाल्लाह इतने सालों में। लेकिन जो पब्लिक का रिस्पांस था, जो हमारे डोनर्स का रिस्पांस था, वो बहुत ही, हमारे मीट एंड ग्रीट में ही बहुत से लोगों ने स्कूल्स अडॉप्ट कर लिए।
ठीक है, तो मेरा ख्याल है इस साल जो रोड शो होगा इंशाल्लाह, हम समझते हैं, और मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, रिचर्ड शायद घबराते हैं कहते हुए भी, इंशाल्लाह 50 to 75 स्कूल्स हम इंशाल्लाह अडॉप्ट करवाएंगे, हमारे डोनर सब रेडी हैं इंशाल्लाह। गुड। इंशाल्लाह। हाँ, तो उसमें अचानक से 5000 7000 बच्चों को और एजुकेशन मिल जाएगी, और फिर हमारे जो बड़े कैंपसेस हैं उनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग में इस्तेमाल कर पाएंगे कि वहाँ टीचर्स प्रोड्यूस हो इंशाल्लाह ज़्यादा। और जाहिर है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की टीम के लिए भी, तो इंशाल्लाह, और रिसोर्स अगर हमारे डोनर सपोर्ट करेंगे तो हम पाकिस्तान में भी एक अच्छा रिसोर्स पूल प्रोवाइड कर देंगे डेफ रीच की टीम को, ताकि वो एक प्लान इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि बहरोज भाई, ये जो बहरोज भाई, ये गवर्नमेंट अमीन भाई ने जो बात कही है ना, ये बात हमारे बहुत सारे डोनर्स को, जिनको तो आप माशाल्लाह वो कहते हैं नब्ज नब्ज से वाकिफ़ है, बिल्कुल बिल्कुल उनको हिला देगी कि आप किसी भी अपने मरहूम के नाम पे या अपने जो बुज़ुर्ग अल्लाह उनको हयात दे, उनकी मौजूदगी में उनके इसाले सवाब के लिए उनके नाम से उनको खराज तहसीन पेश करते हुए आप एक स्कूल डोनेट कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। थोड़ा अपने जज्बात इस हवाले से ज़रा बताइएगा। मैं जज्बात मकसद है कि इसमें शफात एक बहुत कमाल की बात जो थी, जब स्कूल विजिट किया तो उसमें बहुत से टीचर्स ऐसे थे जो इन्होंने ट्रेंड किए थे जब वो आए थे इनके पास, या कम उम्र थे, और वो ही उन बच्चों को टीच कर रहे थे। तो ऐसी फीलिंग थी, मैं जज्बात की बात कर रहा हूं तो काम देख के जज्बात तो उभरते हैं ना, और हमारे जज्बात तो वैसे ही, अब तुम्हें पता ही है शफात, पाकिस्तान में रह के जज्बात को कंट्रोल करके चलना पड़ता है, लेकिन कंट्रोल करके लेकिन ये जो रिचर्ड और इनकी टीम ने जो काम किया है, ये फिनोमिनल भाई, ये, और इसका इंशाअल्लाह ताला देखना, अल्लाह ने चाहा, मैंने रिचर्ड से ये भी कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने हमारे चैनल्स हैं, मॉर्निंग शोज हैं जिसमें आप शादियां दिखा रहे होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि रिचर्ड को वहां ले जाएं और आगाही हो, लोगों को पता चले। अब पता ही नहीं है, यानी मेरी उम्र 67 साल है, मैं जब विजिट किया है मैंने डेफ रीच, तो पता चला है कि ये कहानी एक और है भाई, यहां भी तो काम करना है। वाह 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 वाह। तो मैं चाहूंगा सर आप भी अपने अंदाज में सर एक हमारे जो देखने वाले हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि वो आगे बढ़ें और स्कूल्स अडॉप्ट करें, स्टूडेंट्स को अडॉप्ट करें, उनको स्पॉन्सर करें और इस कार्य खैर में शामिल हों। हाँ, मैं तो हमेशा यही कहता रहा हूं, और जितने भी नाजरीन सामीन जो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप यकीन जानिए कि अल्लाह ताला ने हमें सारी नेमतों से नवाजा है। सबसे बड़ी नेमत है सेहत की नेमत, और आप यकीन करें हम सब औलादों वाले हैं, नवासे नवासियों पोते पोतियों वाले हैं, तो हमारे बच्चे अल्लाह ने बिल्कुल सही हमें दिए हैं, उस पाक परवरदिगार का बड़ा एहसान है। बेशक। लेकिन जो माँ बाप जिनके बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और उनके पास मीन्स नहीं है कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत कम है, आई एम श्योर अमेरिका में इदारे होंगे, यूरोप में इदारे होंगे, और ऐसे इदारे हैं, आई नो दैट, पर पाकिस्तान में नहीं है। तो हम सब ने मिलके उनके लिए बहुत पैसे जमा करने हैं, और आप यकीन कीजिए कि आपको आपके असासों में, आपके पैसों में कमी नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि मेरा ईमान है इसमें कि ये हम बिजनेस है, अल्लाह मियाँ के साथ बिजनेस कर रहे हो भाई, इसमें नुकसान हो ही नहीं सकता। तो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े और डेफ रीच तक रीच करें तो मजा आ जाएगा। आप जिंदगी का मजा ना आए तो फिर बोलिएगा, क्योंकि शफात, जब आपके अपने बदन से औलाद होती है, जो आपकी सगी औलाद होती है, उसकी फीलिंग अलग होती है, जब औलाद की औलाद होती है उसकी फीलिंग अलग, लेकिन जब आप ऐसे कामों में शामिल हो जाते हैं, खुदा की कसम इससे अच्छी फीलिंग मैंने तो महसूस नहीं की अपनी सारी जिंदगी में। क्या बात, जो क्या बात, वाह, मैं सच कह रहा हूं, ये ऐसी, हाँ, बेलॉस एक फीलिंग है, और
अल्लाह ताला से जुड़ने का बेहतरीन तरीका है, यकीन जानिए। आपको रब से करीब कर देगा ये काम। बिल्कुल सुभान ऐसा अल्लाह, है, बेशक सुभान ऐसा। अल्लाह। हमारे साथ इस वक्त अमीन मकातिया साहब भी मौजूद हैं, बहरोज़ भाई भी मौजूद हैं और हमारे साथ अवैस भाई भी गालबन मौजूद हैं। और यहाँ वक्त हो गया हमारे पास आप लोगों को एक एक जो कि हम सारी बात जो कर रहे हैं ना, ये तो हमारी कही भी बात, मैं आपको कह रहा हूँ जी, हम यहाँ डेफरीज बैठे हुए हैं, रिचर्ड शोरील हमारे शोरील साथ दिखाएं। है तो कुछ काम तो दिखाए ना आपको। तो हाँ, आपको ज़रा दिखाते हैं कि डेफ रीच पे ये जो लोगों को असर होता है कैसे होता है। तो कैसे हो? एक विजुअल है हमारे पास, ज़रा देखिए, एंजॉय। Class is over. Let's go. Let's go. Assalamu alaikum. Very nice to meet you, Ji. Very nice to meet you. Thank you for the wonderful work you're doing. Oh, thank you. Thank you for joining us. I look forward to meeting you in person when you come to Pakistan. Same here. I will look forward to it greatly. Super. Excellent. आदिल, आपका कोई रीसेंट है पाकिस्तान आने का प्रोग्राम? अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप? बस दुआ दुआ। मेरा आना रहता है, काफ़ी आना रहता है। सो आई डू कीप कमिंग। अमूमन इस्लामाबाद होता है। तो आप डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शफाद अली एंड आई थिंक आप अभी बस रिसेंटली गए हैं इस्लामाबाद से, आई थिंक दो जी मैं आई कम फेयरली ऑफन। मेरी काफ़ी सारा रिसर्च वगैरह। सो बट जी बस ठीक है। अगर मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आपके इस्लामाबाद आप आते जाते हैं, आपके ताल्लुकात है, तो आप आए खुल के, वरना तो सोच समझ के आए भाई। अच्छा ठीक है। ख़वातीन और हज़रात, वो तमाम लोग जो कि डॉक्टर आदिल नजम से वाकिफ़ हैं, वैसे तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, और वो लोग जो कि अकेडमिया में से हैं, उन्होंने इनका नाम ना सुना हो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हालात पे, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पे आप इनको बहुत सारे टीवी चैनल्स पे बतौर मुबस्सिर भी देखते रहे हैं, लेकिन एक बड़े अरसे तक ये पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक भी रहे हैं, एज एन एकेडमिक भी, एज एन एनालिस्ट भी। तो हमारे लिए, मेरे लिए तो बड़े एजाज़ की बात है कि आज आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद डॉक्टर आदिल साहब। तो सर, पहले तो बड़ा ही मेरी तरफ से भरपूर किस्म का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। The second thing which I would like to ask you is about the importance of education, of especially the education of children with the special needs. The idea which Deaf Reach is bringing forth it's completely different in Pakistan, yet it has got its own challenges. आपका इसके हवाले से क्या ओपिनियन है, and how do you see the potential in it? Please, sir. No, thank you very much, Ifad. Thank you for that kind introduction. But thank you for doing what you are doing in spreading the word, and thank you certainly to Deaf Reach for what they are doing, because this is really spectacular work and important work, not just for Pakistan but for all humanity. I
You were very kind in your introduction. There are many things जो मैं करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी सबसे इम्पोर्टेंट अगर मेरे लिए कोई पहचान है वो ये है कि तालीम का जो शोबा है उससे मुंसलिक हूँ. कई बार मैं मजाक करता हूँ कि मैं 5 साल का था तो माई पेरेंट्स लेफ्ट मी इन स्कूल एंड नो वन हैज कम टू पिक मी अप. तो मैं वो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी, एक एक तालीम के काम से दूसरे काम में. एंड आई थिंक एजुकेशन जो है इज द सेंट्रल थिंग हेयर. तो हम यकीनन वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन विदाउट जो सुनाई. We also talking about education, and the reason that linking deaf young people with education is so important is because education is how you reach your potential. तो ये सिर्फ किसी की मदद करने की बात नहीं है. हर इंसान का ये हक है. दिस इज द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू बी एबल टू लिव अप टू देयर कैपेबिलिटीज. And that is why this work is so important, right? We usually think of जिनको हम disabilities कहते हैं as just a hurdle, but there are many things that many people have, and there are many things that many people don't have, but it is a right to reach your capability. I would encourage people कि हम जरा थोड़े से मुख्तलिफ सोचें कि deaf लोग की जो capabilities है अगर society के पास ना हो तो क्या होगा. मसलन आप में से बहुत से लोगों ने बीथोवन का नाम सुना होगा. राइट, बीथोवन क्यों मशहूर है? अपनी म्यूजिक के लिए. म्यूजिक के लिए. राइट. So this is about human potential. Let me give you another example. Let me give you the example of Thomas Edison. Thomas Edison जिसने गोआई का सबसे बड़ा आला बनाया, meaning the telephone, right? Important in telephone, was deaf in one ear. So when I think of deaf reach and I think of supporting deaf reach, what I'm talking about is it is the right of every person to reach their potential. हर पाकिस्तान का हक है कि वो अपना पोटेंशियल रीच करे, and that is why deaf reach is important. Well, thank you for that, Dr. Abdullah. And you recently wrote a chapter in a newly published book about the youth in Pakistan, how I think over 60% of the population is under 30 years of age. And that the future of Pakistan is dependent on the empowerment of this important sector. And I just want to add to that, there's that a large part of that sector are also deaf youth, and they equally need to have this ability to be empowered through education, through employment, so that they can become contributing members of society and not dependent on society for their support. Indeed, Rich. And it is not just that they should be able to, they want to. It is very clear that they want to, right? They have talents, they have abilities. And rather than focusing on those abilities that nature might not have given them properly, we should think also of the picture on my side. जी हाँ. अगर आप में कोई देख रहा है, try to recognize that cricket team. That cricket team is the Pakistan cricket team, the deaf Pakistan cricket team. And they just Every won. player of that team represents this country. So what Richard is saying, this is about empowerment. Yes. This is not only just reaching out our hand and saying, we are here for you. This is saying you have the right to reach your best. And that is what I think we are all calling to support here. Thank you. And I have to mention one of our teachers who was a former student. Now he's a teacher. He was a member of that deaf cricket team. So we're very proud so of we them are all. not only creating employment opportunities, but we're also creating champions in this school, in this facility. We are. Ek Shafat, if you allow me to say Please, something, you were talking earlier with Richard about employment. One of the reasons I find inspiration in organizations like Deaf Reach is we spend too much time telling ourselves what's wrong with us. We do not tell enough stories about what's right with us. There are so many good things everywhere in Pakistan, like Deaf Reach, right? Which is central to this country, and that is important. I mentioned this with employment, for example, is there is a 2% of employees should be 8% should be those who might have disabilities.
For many employers, and I know this from experience, I was the vice chancellor of a university in Pakistan, I've been working in Pakistan. For many employers, they do want to fill that law, right? They do want to have employees. And all of Pakistan, KFC was mentioned here. I know universities here. Part of the challenge is people who have the education, and that's where linking education and this being deaf is important. That if you give them that opportunity, not only are they willing to take it up, also opportunity society that are available to them that are not being utilized because we are not giving them the. And this is a very good point, and I like to tell our donors, the corporate sector, that this is a full circle. If they're supporting the education and skills training of these children now, they're creating a potential workforce that can add value to their businesses for generations to come. And we've got take for example, Sapphire Textiles in Lahore. We set up a training section in our school there. They're training 25 deaf boys and girls in a 3-month period. They provide a stipend and support. They're certified and they join full time. And in the last 2 years, now Sapphire has employed over 250, and they're supporting the education process and this is a model that can be replicated in so many other companies. That's amazing. And we'll provide the bridge that's needed, you know, to help the managers learn to communicate. We do sign language classes for them so that it's not so rocky. So ख़वातीन हज़रात, आप में से जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि रिचर्ड के सीने पे ये सितारा खिदमत क्यों चमगा रहा है, तो आप समझ लें कि रिचर्ड इज टॉकिंग अबाउट 360 degree solutions, and he is talking about, you know, not only just, you know, addressing the problem, he's also talking about the addressing it in a longer term. हमारे साथ जनाब इस वक्त इरफान बर्नी साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं अगर वो इस वक्त हमें सुन सकते हैं। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम शफात। सर कैसे हैं आप, क्या मिजाज हैं आपके? और माशाल्लाह ये तुम्हारी स्क्रीन बड़ी रच बस गई है सर, माशाल्लाह 2 नए जवान चेहरे भी नजर आ रहे हैं सर, इनके बारे में भी जरा मुतारिफ कराइएगा, कौन है ये? Izyan and Aveen, they have been part of Deaf Reach at a very young age, probably the youngest supporters of the cause. And I think बेहतर रहेगा अगर हम आप इज़ियान और अवीन से इनका introductions खुद से लें and let them give the opportunity to express their perspective on that. So पहले तो मेरे ख्याल में हमारी स्क्रीन माशाल्लाह इतनी बाहर हो गई है, थोड़ा सा हम भी अपने आप को ज़रा अकोमोडेट करते हैं। बहरोज़ भाई, आप बड़ी देर से मुंतज़िर हैं, तो मैं चाहूँगा सर एक क्लोजिंग नोट दीजिएगा ताकि हम इसके बाद प्रोग्राम के सिलसिले को इसके अंजाम की तरफ लेके जाएं। क्लोजिंग नोट जो आदिल की बड़ी अच्छी बात लगी है मुझे एजुकेशन के हवाले से। हमारा तो प्रॉब्लम ही यही रहा है एजुकेशन का, तो ये एक और रास्ता है। ये जितने डोनर सुन रहे हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत नसीब करे, तो ये एक बेहतरीन रास्ता है, मैं ये समझता हूँ डेफ रीच का। और हम जितना भी काम, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे काम, स्पेशली हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स पे बहुत काम होता है, हमारे यहाँ और बहुत सी चीजों पे एनजीओज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनजीओज। वो खैर, ये जो काम है, ये काम सबसे अफजल करने वाला है, क्योंकि ये जिंदा लोग हैं भाई, ये हमें देख सकते हैं, ये हमें सुन नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते यार, तो इनकी मदद। मुझे रिचर्ड की बात ही बड़ी खूबसूरत लगी कि अगर आप जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करने के लिए और सामने जो अटेंडेंट है वो साइन लैंग्वेज समझता है, तो फिर माजूरी आप में है, क्योंकि वो जुबान जानता है, आप उसकी जुबान नहीं जानते। क्या बात है, क्या बात है, क्या जैसे केएफसी में है ना, बहुत से इन्होंने हायर किए हैं पाकिस्तान में, मैं अक्सर जाना हुआ है, तो वो बड़ा मैं जब गया हूं तो मुझे मेरे नाम का इन्होंने बताया, रिचर्ड गाइड मी एंड यू नो, कि ये नाम बहरोज है, और तालियां जो है वो
ऐसे हाथ दोनों ऊपर करके बजानी है, तो ये एक कमाल काम था भाई। ये है ना। तो बस ये करने वाला काम है और इंशाल्लाह ये किया जाएगा, अल्लाह ने चाहा ये जारी रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बहरोज भाई Thank आपकी you, आमद Feroz का। थैंक यू bhai. सो मच फॉर Shukriya. ज्वाइनिंग थैंक इन। यू, मोस्ट मोस्ट वेलकम, माय और ऑनर। खवातीन और हज़रात, प्लीज़ आपके सामने जो नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पे, इस पे आप डायल करके हमारी इस डिजिथॉन में शामिल हो सकते हैं। वी आर अ शरिया कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन और आपकी जितनी भी ज़कात है उसके लिए टोटली एलिजिबल है। सिर्फ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप जितना भी अमाउंट स्पॉन्सर करना चाहें, डोनेट करना चाहें, एक बच्चे का हो विच इज़ $50 अ मंथ, चाहे वो 100 बच्चों का हो विच इज़ $60,000 अ ईयर, जिस तरह से भी आप डोनेट करना चाहें, डेफ रीच में आपको ये बिल्कुल इत्मीनान रखना चाहिए कि आपका ये पैसा इंशाल्लाह महफूज हाथों में है। एंड नाउ वी मूव टूवर्ड्स यंग होस्ट और गेस्ट शुड आई से। सो सबसे पहले चलते हैं टू द लेडी, pretty young lady is sitting over there. तो उनसे पूछते हैं कि जी what's your name and how were you first introduced to Deaf Reach and what work have you done so far for Deaf Reach? Assalamu alaikum, everyone. First of all, I just want to say thank you for having me here. I'm also a big fan of Mr. Behrouz. I watched him on a lot of TV shows, so I just wanted to say hi to him. Um, Hello. but my name is Aveen, and I've been part of Deaf Reach, as like my Abba was saying, since I was maybe in the first grade, just attending fundraisers and just seeing what is Deaf Reach all about. And I had the opportunity with my brother Azyan this past summer to visit the campus in Karachi. And it was, I must say, like one of the most transformational experiences I've ever had. We were there for around a week, and it was incredible just seeing, these kids who, as like we've been talking about, come from marginalized communities and seeing them being empowered. And especially as a girl, it was very like beautiful to see fellow girls like feeling like they have a voice and feeling that they could too be part of a conversation. And just more information about me. So I go to high school, Phillips Exeter Academy in America, and I'm a third year, so that's junior. And also, I spoke at the United Nations Conference of Women, and I spent like a whole day there talking about Deaf Reach and what they do, and sort of like advocating and letting people know like about this organization. And I connected what Deaf Reach does and how they empower, especially female, little girls to even women. And I talked about how there's sort of like this digital divide in Pakistan as well, but how Deaf Reach is also providing a lot more, like a seamless transition, I'd say, for kids to having access to internet, access to computers, and it's really great to see this type of representation Young happening, and lady, I've been blessed to be part of this. you have been doing social services. You've spoken at UN and you're a high school junior. So Yes. how old are you? Can you please come again? 17. You're 17. Gee. Very proactive young woman, I would say. I mean, she's been associated with this organization since grade one. Yes. So kudos to you and your Abba. Is Abba already here? Ji, Abba's here. Yes, sir. Yes. So, sir, I mean, hats off. और ज़ियान की तरफ भी चलते हैं and let's ask his experience about this organization. So, hello, sir. How are you? Just to say, they didn't only visit; they spent a whole week on an internship, volunteering from 8 in the morning till 4 in the afternoon daily. Wow. So that's where she's speaking from, that level of experience. Amazing, amazing. So let's go to Azyan Saab. Sir, are you listening to us? Yes, assalamualaikum everyone. Walaikum I'm assalam. Azyan. So I'm Azyan. I'm a current sophomore at Phillips Exeter Academy. And I've been a part of Deaf Reach since I was very young. I've been attending fundraisers, and I've had the opportunity to be a part of different volunteer opportunities, like growing up. And it was a great experience for me to get like in touch with Deaf Reach at a very young age.
so as Aveen was saying, we both go to Phillips Exeter Academy, which is a boarding school in New Hampshire in the United States. And specifically, last summer, me and Aveen, we were able to visit the Deaf Reach campus in Karachi for about 1 week. And throughout my stay, I was able to sit on classes. I was able to talk with various teachers and how they created their lesson plans. I was able to help out at lunchtime, which was very chaotic, but it was so great interacting with all the students. And then while we were completing our internship there, we were also able to learn sign language, which was it was a very great experience. And I also know how to sign my Pakistani name Sign now. Language, right? Yeah, Pakistani Sign Language. So Amazing. He's a so fast speller. He's and spelling it. so throughout my stay, I was able to complete my internship successfully. And just seeing the joyous children and like their passionate teachers opened my eyes to the wonderful work that FGSF and Deaf Reach have been doing to improve and better the lives of thousands of deaf students throughout Pakistan. And overall, it was just a great experience interacting with the students and like seeing their beautiful faces. And Amazing. I don't know, it was just an amazing time. Amazing, amazing, amazing. How old are you? I'm right now 15. Okay. So you're 15 right now, and you said that you associated yourself to Deaf Reach at a very young age. You are at a very young age, little man. But he's very mature. But I mean, the maturity you're talking with, it looks like as if I'm talking to a 30-year-old guy with lots of experience with social work and everything. So hats off to you, young man. This is amazing. This is amazing. So I need to talk to the Abba ASAP, because this sort of a parenting is like a role model parenting, and Abba can explain us more about it. So Abba ji, ये माशाल्लाह दो हीरे आपने अपने जो घर में पाले हैं, इनका एक्सपीरियंस डेफ रीच के साथ, इनका एक्सपोजर डेफ रीच के साथ, और फिर ये माशाल्लाह से the enthusiasm with which they are explaining deaf reach, this is amazing. So sir, कैसे हुआ ये सब कुछ? I think the story goes back, Shafat, when I was first introduced to, to Richard back in 2009, 2010 onwards, been working and supporting. As the kids start growing up, they start seeing me, they start looking at me, how I'm being part of this. They started developing this interest. And honestly, we never actually force or ask or pressurize them to come and join. I mean, they just naturally getting inclined towards it. And we as parents continue to support them, continue to evolve them. I personally feel as a second generation Pakistani here in America, it's very important for these young generation to be connected with with Pakistan in a more humanitarian way, and I think this was the primary reason behind it. And Alhamdulillah, I think they both got attached, and they have a lot of heart and a lot of mind into the initiative. वाह वाह वाह। डॉक्टर आदिल, आप ये सब देख रहे हैं और आपने बच्चों की बात भी सुनी। मैं चाहूँगा कि एज एन एजुकेशनिस्ट आपका कुछ राय लूँ, आपका ओपिनियन लूँ इसके ऊपर, क्या कहिएगा? नहीं, लेकिन इन बच्चों के तो और जो है तकरीर खून बढ़ता है, कह रहे थे, और इस किस्म के अगेन ये जो जज्बा है ये बहुत मौजूद है। वो मटने वाली जो बात है, वो चाहे अमेरिका में जो पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हो, मेरा तो गुजारिश फिर वही है कि असली जो चीज़ है, असली जो सवाल है, वो लोगों को मौका देने का है और हर पाकिस्तानी को उसका पोटेंशियल रीच करने का है। एज ए एजुकेशनिस्ट आपने बात की, तो मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा जिसका जिक्र हुआ है, लेकिन आई वांट टू हाईलाइट कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ द इशू ऑफ डेवलपिंग ए साइन लैंग्वेज इन पाकिस्तान इन उर्दू। क्योंकि अगर आपने तालीम देनी है तो आपको फ़ाल तालीम तब मुयसर होगी जब वो उस ज़ुबान में हो जिसमें इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी।
and I think that focus of DeafReach is one of the things that has made it much more important for me and inspired me much more. That this is not simply that we are helping, it is not simply that we are providing education, but also thinking about what that education is. I go back to that point कि इन बच्चों में जो इन स्कूलों में मौजूद हैं या इन समर कैंप्स में मौजूद हैं etc, there is a Beethoven there, there are many Beethovens there, देयर आर थॉमस एडिसन्स देयर। तो जब हम किसी को भी, और इस वक्त हम डेफ पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी को अपना पोटेंशियल अचीव करने से रोक देते हैं, तो वी डू नॉट नो कि उसने अदरवाइज एडिसन बनना था, उसने अदरवाइज बीथोवन बनना था, उसने जाके क्रिकेट खेलनी थी, राइट? सो दैट इज द पर्पस कि वी नीड टू नॉट जस्ट एम्पावर, एक तो हमें उनके सामने से जो हर्डल्स हैं उनको हटाना है, बट वी हैव टू गिव द एबिलिटी फॉर एवरी पाकिस्तानी, इंक्लूडिंग एवरी डेफ पाकिस्तानी, टू बिकम द बेस्ट पाकिस्तानी दैट दे कैन बिकम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत थोड़े लफ्जों में बहुत ज़्यादा बात, और इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट व्हाटएवर यू हैव जस्ट सेड, बिकॉज इट्स अमेजिंग, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो दिल चाहता है आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं, और इट्स लाइक अ फैज़याबी का सिलसिला है। सो विद दैट मैं चाहूँगा अमीन मकातिया साहब की तरफ, और मैं चाहूँगा अमीन साहब आप बड़ी देर से वेट भी कर रहे हैं, कुछ हम चूँकि चाहेंगे कि अब इस प्रोग्राम को ज़रा इख्तिताम की तरफ ले जाया जाए, तो पहले अमीन साहब आपसे एक क्लोजिंग नोट लेंगे और फिर आदिल साहब आपसे। जी अमीन साहब। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो डोनर हैं, डायस्पोरा जो यूएस में है और कनाडा में जो हैं, तो बस इस हमारा सबका, आपका, हमारा जो जो आप सब आए हैं, जो मौजूद हैं लोग, सबका एक ही मकसद है, और सब जानते हैं हमारी कम्युनिटीज़ जो हैं बहुत सपोर्ट करती हैं। अनगिनत प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ आते हैं, पाकिस्तान के जो NGOs हैं यहाँ आते हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलती है। और चूँकि हम एक नया प्रोजेक्ट है, पिछले 1.5-2 साल से हम मेन स्ट्रीम यूएस में आ रहे हैं, तो थोड़ा अवेयरनेस का भी एक स्टेज था, और अब इंशाल्लाह काफ़ी शहरों में चूँकि हम जा चुके हैं, तो अब नेक्स्ट ईयर जब हम जाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप सोचें अगर एक छोटे छोटे स्कूल अडॉप्ट कर सकें आपके शहरों में, गांव में, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा डेफ रीच के लिए कोई स्कूल खोलना, तो मैं चाहूँगा कि आपके नाम के साथ, आपकी फैमिली के साथ एक अच्छा काम इस छोटे शहर में शुरू हो जाए, जहाँ बहुत ही गुर्बत है, बहुत सी, हर जगह डेफ रीच अपनी वैन्स नहीं भेज सकते, हर जगह 2.5-3 लाख के कैंपस नहीं बना सकता है डेफ रीच। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप प्लीज़ सपोर्ट करें डेफ रीच को, और ये ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही अमाउंट देनी होती है, आप जब फ़ोन करेंगे तो आप मंथली प्लेजेस भी कर सकते हैं, $1000 महीने भी दे के अपना स्कूल का जो कमिटमेंट है पूरा कर सकते हैं, 13,000 14,000 में, फिर इसके बाद जो चलाने की कॉस्ट है। तो प्लीज़ को पार्टिसिपेट करें इसमें, और क्योंकि जिस तरह मैं बहुत सुना आप सबसे, हम बड़े प्रिविलेज हैं, बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ब्लेस्ड हैं, हम भी ब्लेस्ड हैं बहुत ज़्यादा। अभी हमारे जो जो माशाल्लाह छोटे हमारे लीडरशिप हैं, आप स्क्रीन पर नज़र आ रही है, उनसे आप पूछें, उनके दोस्तों से पूछें, तो ये तो वहाँ सोच भी नहीं सकते हमारे बच्चे जो इतनी डिफ़िकल्टीज़ में है राइट नाउ। तो बहुत से NGOs हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हॉस्पिटल्स बना रहे हैं और क्लिनिक्स बना रहे हैं, फूड बैंक्स हैं, लेकिन ये एक ऐसी स्पेशल कॉज है जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, जिस तरह बैरोज कह रहे थे, या कि उनको पता ही नहीं था, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। आप भी रिसेंटली इन्वॉल्व हुए, आप सोचें किसी को अंदाजा है कि ID और रिचर उनकी जो टीम है वो ये काम कर रही है वहाँ पे, मुझे भी नहीं पता था। तो ये ऐसा कॉज है जिसको शायद इतना ग्लैमराइज नहीं किया गया या बताया नहीं गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा कि शेयर करें, अपने दोस्तों से बताएं, फेसबुक वगैरह में, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, तो यू नेवर नो कि आपके तवज्जो से कोई और ऐसा शख्स आ जाए जो वो बड़ा काम कर दें, जो मैं खुद ना कर पाया लेकिन मेरे कहने से कोई और कर जाता है, तो उसका भी मुझे सवाब मिलेगा। तो इंशाल्लाह प्लीज़ स्कूल को अडॉप्ट करें, और हम चाहते हैं बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल्स हों और उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि 1 मिलियन बच्चा पाकिस्तान में है कहते हैं, तो उस मिलियन तक तो पहुंचना आसान नहीं है। और जो हम 5 साल या 10 साल के बाद वहाँ पहुंचेंगे, तो वो बच्चे तो अपनी उस एज से गुजर चुके होंगे जहाँ वो सीख सकते थे कुछ। तो हमें बहुत जल्दी जाना है, और बहुत सबकी सपोर्ट चाहिए होगी। तो प्लीज़ अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपने ये रिकॉर्डिंग या इसके बाद जो भी ये कंटेंट कहीं अब नज़र आए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ लोगों से शेयर कीजिए, और अपनी तरफ से हमारे मैं भी डेफ रीच का एम्बेसडर हूँ, आप भी हैं, आप बताएं उनको कि भाई ये मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, व्हाई डोंट यू गो, पाकिस्तान जाओ तो किसी शहर में जाओ, लाहौर कराची में जाके विजिट करो, या कम से कम।
अमीन भाई, बड़ी बड़ी ये जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आपके प्लान्स माशाल्लाह देख के ना मुझे जो है ना बॉडी में करंट फील हो रहा है। एंड आई थिंक आपकी बात सुन के अब मेरे पास रिचर्ड के लिए बस एक सजेशन है दैट यू नीड टू फास्टन योर सीट बेल्ट्स। This guy has got aggressive plans and the road is bumpy ahead. Amin has been a motor, driving our car, really moving. So thank you, Amin Saab. We appreciate it. Absolutely, absolutely. Dr. Adil was going to say something. स्कूल का काम कर लिया? ठीक है, खूब दिल लगा के पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हें ही बुढ़ापे का सहारा बना। उम्मा रिलीफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम भी कर रही है, जिसमें साफ पानी की फरहमी एक अहम मकसद है। गरीब और नादारों का सहारा बने, उम्मा रिलीफ का साथ दें, जो दुनिया भर में लाखों यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और कुदरती आफात से मुतासर अफराद की इमदाद करने में पेश है। अपने सदकात, ज़कात और फिदिये की रकूम से अपने मुसलमान भाइयों की मदद का जरिया बने। अपनी डोनेशंस भेजने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ummarelief.org/donation और कॉल कीजिए डोनेशन 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 और कॉल कीजिए आपसे रिश्ता है प्यार का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर ज़ाविया। What if you can't fast during Ramadan? Muslims who can't fast due to old age or illness should give fidya for each fast missed in Ramadan. As Allah subhanahu wa ta'ala says, and as for those who can fast with difficulty, they have a choice either to fast or to feed a poor person. But whoever does good of his own accord, it is better for him, and that you fast it is better for you if only you know. Hidayah Foundation distributes fidya by providing meals to the poor. Donate your fidya, zakat, and sadaqah. We'll ensure it reaches the deserving. आपसे रिश्ता है प्यार का। गरीब और नादारों का सहारा बने, उम्मा रिलीफ का साथ दें, जो दुनिया भर में लाखों यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और कुदरती आफात से मुतासर अफराद की बिला रंग व नस्ल इमदाद करने में पेश है। अपने सदकात, ज़कात और फिदिये की रकूम से अपने मुसलमान भाइयों की मदद का जरिया बने। उम्मा रिलीफ इंटरनेशनल को अपनी डोनेशंस भेजकर सवाब दारैन हासिल कीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ummarelief.org/donation और कॉल कीजिए 1-800-713-4482 पर।
विटामिन हर्बल होम्योपैथिक सेंटर सिंस 1989। अपनी बीमारियों का मुकम्मल इलाज माहिर होम्योपैथ की जेर निगरानी हर्बल और होम्योपैथिक फार्मूलों से करें। सुपर डायबिटिक फार्मूला, हर्बल फार्मूला टू मेंटेन नॉर्मल शुगर लेवल। मैं हूं इफ्तिखार चौधरी, होम्योपैथ हर्बलिस्ट। दुनिया अब एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट से तंग आ चुकी है। अब आप होम्योपैथी की तरफ आएं। Call me for free consultation. For orders and details, visit our website or consult the founder of Nutra Herbal and Homeopathic USA, Iftikhar Chaudhary. अमेरिकन ड्रीम आपका हक है। इमिग्रेशन हो या कोई और कानूनी मसला, मिसबा चौधरी से राब्ता कीजिए। मिसबा चौधरी इंतहाई काबिल, तजर्बेकार और ऑल राउंडर अटर्नी हैं। उनका नाम ही कामयाबी की जमानत है। हम न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन के अलावा मजीद 50 स्टेट्स और ग्लोबली इमिग्रेशन की खिदमात फराहम करते हैं। इमिग्रेशन की दुनिया का तजर्बेकार नाम मिसबा चौधरी एंड एसोसिएट्स। We mean immigration. Contact New York 718-487-3100, Houston 281-870-1300, www.misbachaudhry.com. शाहनवाज के फ्रोजन फूड्स अब एक नई पैकिंग के साथ, लेकिन जायका और मयार वही जिसे आपने हमेशा पसंद किया। 100% हलाल। जल्दी कीजिए और अपना फेवरेट शाहनवाज फ्रोजन फूड्स रियायती कीमत पर हासिल कीजिए। शाहनवाज, नाम ही काफी है। कड़ाही खानी है तो शिराजी पर आइए। शिराजी कड़ाही हाउस की चिकन और मटन कड़ाही, बेहतरीन अज्जा के साथ ऑथेंटिक मजा। शिराजी कड़ाही हाउस, 18402 होर्स हार्डिंग एक्सप्रेसवे, क्वींस, न्यूयॉर्क। हमेशा की तरह इस साल भी शाहनवाज रमजान बफे। Think the cause, तो which makes absolute sense actually. So when I started like interacting with DefReach almost 14 years back, and the first question I came to कि अगर मैं कराची में पला बड़ा रहा और मुझे उस इदारे का पता नहीं चला, तो मेरी तरह के तो हजारों सैकड़ों लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं हो, जो मुल्क छोड़ के जा चुके। So I think that was the triggering point for myself, and me and Saisa, we started requesting Richard to come to US and let us help and establish the organization, and that's how we started building it. I personally feel that in times to come, there are key things from somebody who's sitting outside Pakistan, here in US. My whole philosophy is that we need to build 2-3 things. We need to start engaging the next generation with the cause. That's very important. Because the existing Pakistani diaspora is aging, they are getting, or जो उनकी next generation है, they are not as connected with Pakistan as they're supposed to. My entire philosophy behind connecting my kids revolve around the same ideology कि आपके जो next generation है पता होना चाहिए where the roots were coming from. The second thing is, हमें sustainability पे काम करना चाहिए. We should not be acting like an organization जो हमेशा से बहुत donations या charity के around ही रहे. I think we need to create a more sustainable model, and sustenance comes with more financial vehicles and instruments available in the market. So we started the endowment fund, for example. We started, allocating and placing our funds into areas and models where we have more recurring income available, which could support the schools, institutions. अगर आप अमेरिका में देखें तो every other institution is having enormous amount of money available, and which has been invested into the right tools and markets, and they reap a lot of benefits out of it, and it brings the sustainability. So that's one big goal we have. We already started working on it. Inshallah, we'll continue to evolve with it, and next few years we will be inshallah reaching our जो हम लोगों ने अपने at least 2 years 3 years goals रखे हैं, उसको हम अचीव करते जाएंगे. It's a great initiative. मैं हमेशा कहता हूँ जैसे जिसने माल्टा, जो आपकी माल्टा की एग्जांपल है, जैसे माल्टा नहीं चक्कर उसे पता नहीं है. When I started tasting this Malta, I said, you know what, देखिए हेल्थ केयर में फूड हंगर इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी. आप अभी भी इंटरनेट पर आए और कहें कि भूखे लोग हैं, लोग पैसे देना शुरू कर देते हैं. हेल्थ केयर कम्स द सेकंड. आप रख दीजिए आदमी मर रहा है, इसको the education for some reason becomes such a least priority for everyone. And that's where I always thought here it's a challenge. Why not? Let's pick this cause and let's start supporting and help. And once we deep dive into it, and we were, we started becoming more convinced that this is a very right thing to do. दूसरी चीज ये जो मैं अपने व्यूअर्स को, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, स्टैटिस्टिकली इट्स वे मच बेटर फॉर अ डेफ ट्रेन किड जो इनके इदारों से पढ़ के निकलता है
वो अपनी आम जिंदगी में मच बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू द वन जिसने कोई ट्रेनिंग ही नहीं हासिल की हो। सो अगर आप स्टैट्स उठाएं पिछले लास्ट 10 सालों के, देन यू सी द नंबर्स एंड द नंबर्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आई थिंक इट्स नो ब्रेनर नॉट टू सपोर्ट इट। It's no brainer not to continue to help them out and make them a much larger and meaningful institution. That's it. Quite a thoughtful analysis, I would say, and at the same time आपने ना बहुत सारे तारें छेड़ी हैं। आपने इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की भी बात की है, आपने इम्पोर्टेंस ऑफ आउटरीच की भी बात की है, एंड एट द सेम टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें वन probably appreciates the other or sometimes goes against the other, क्योंकि extension और sustainability sometimes are not very viable together। लेकिन जो मॉडल हम यहाँ पे बार बार बता रहे हैं लोगों को वो ये है कि हम ये ब्रिक एंड मॉर्टर स्कूल के साथ साथ स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम पे, स्पॉन्सर्ड क्लासरूम्स पे भी जा सकते हैं और जा रहे हैं। इस चीज़ को आगे लेके जाना है और कॉज को फैलाना है। जैसे सर आपने बात की कि बड़ा फर्क है वो बच्चे जिन्होंने एजुकेशन, कन्वेंशनल एजुकेशन हासिल की है, और वो बच्चे या वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जो कि यहाँ पे डेफ रीच पे या किसी और ऐसे इदारे में आके तालीम हासिल करें। उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके अटायर में, उनकी ओवरऑल पर्सोना में देयर इज अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। तो आई थिंक थोड़ा सा इसको विजुअली साबित करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त एक स्टूडेंट मौजूद है जो, आप यकीन करें, मैं जितनी देर से यहाँ बैठा हूँ वो यहाँ पे मुसलसल गप्पे मार रही हैं इशारों इशारों में, और वो मुसलसल अपने साथी के साथ जो है वो शिकायत है भी, लेकिन वो अपनी दुनिया में मगन है और मुझे इतना प्यार आ रहा है उनको देख के। और मैं चाहूंगा कि हम अगर एक वीडियो पे थोड़ा सा जाएं और इस तरह पे जरा थोड़ा सा एक ब्रेक मिल जाए हमें, ताकि मैं इस शहजादी को यहाँ पे लाके बिठा सकूं और दुनिया को दिखा सकूं कि हमारे यहाँ पे डेफ रीच में लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसे हो रही है बच्चों की। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, इस दौरान हम अरेंजमेंट करते हैं।
तो जनाब ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले अपने नाजरीन को कहा, हमारे साथ इरफान भाई बैठे हुए थे, मैंने इरफान भाई से भी कहा कि मेरे सामने एक बच्ची बैठी हुई है और वो मुसलसल बोले जा रही है, मुसलसल बातें किए जा रही है, और चूंकि उसकी बातें तो साइन लैंग्वेज में है, लिहाजा मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरा सारा जो है ना डिस्ट्रैक्शन, आदिल भाई इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं और मेरा सारा डिस्ट्रैक्शन उसकी तरफ जा रहा था, लेकिन मैंने मज़ा लगाया, बड़ा मुझे बहुत मज़ा आया। तो आज हमारे साथ मौजूद है इंतहाई बातूनी ज़ारा, और ज़ारा के साथ मौजूद हैं उनकी टीचर महरीन। तो पहले ज़ारा से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, मेरा फेस साइन क्या है? ये व्हाइट और फिर ये आपके बालों का स्टाइल है। ओके, ये मेरा नाम हो गया आज। ये आपका फेस साइन। तो दिस इज माय न्यू नेम, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कौन से ग्रेड में पढ़ती हैं आप? ग्रेड 8। ग्रेड 8 में है, ओके, ये ग्रेड 8 में हो गई। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आने से पहले आपकी लाइफ कैसे थी और यहाँ पे आने के बाद आपकी लाइफ कैसी है? कैरियर मैंने स्टार्ट यहाँ पे केजी से ही किया है, तो पहले तो मैं बहुत छोटी थी और मैंने यहीं से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की है, तो इसलिए ओ थ्रू आउट इट्स वेरी गुड लाइफ फॉर मी, क्योंकि मैं डेफ रीच में थी। ओके ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अच्छा, स्कूल में टाइम गुजारना आपको ज्यादा पसंद है या घर पे? कैरियर में ज़्यादा खुश होती हूँ स्कूल में, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकती हूँ और फिर मैं यहाँ बहुत कुछ सीखती भी हूँ। ओके ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे पढ़ाई के अलावा और क्या क्या सीख रही हो? कैरियर एक तो ये कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैं सीख रही हूँ, इसके अलावा फ़ाइन आर्ट्स है, पोट्री है, और इसके अलावा वोकेशनल स्किल्स मुझे सिखा रहे हैं, वो मैं सीखती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सब स्किल्स मुझे आ जाएंगी तो फ्यूचर में मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अच्छा, और फ्यूचर प्लान्स क्या है ये भी पूछिए, फ्यूचर में क्या बड़े होके क्या बनोगी आप? कैरियर मैं जो हूँ ना फेमस होना चाहती हूँ, जैसे आप बहुत फेमस हैं, आपको लोग जो हैं बहुत, तो इसी तरह मैं एंकर बनना चाहती हूँ और डेफ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। दैट्स अमेजिंग ज़ारा, क्या बात है भाई। एक दफ़ा जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं भरपूर तालियां बजाएं इनके लिए, भरपूर तालियां बजाएं, क्योंकि क्या बात है इनकी। अच्छा मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँ, क्योंकि अब ज़ारा के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे मैंने जैसे बताया ना कि सुपर स्टार्स बन रहे हैं। अच्छा वो सुपर स्टार्स किस नौइयत के हैं, ज़रा वो भी सुन लीजिए। सुपर स्टार इस नौइयत के हैं कि ये सुपर स्टार्स जो हैं ये पाकिस्तान का बैज पहनते हैं, पाकिस्तान की किट पहनते हैं, ग्राउंड में उतरते हैं और पाकिस्तान के झंडे गाड़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे अगले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो कितने अरसे से डेफ रीच में आप? कह रहे हैं मुझे ऑलमोस्ट 14, मतलब मैंने ग्रेड 14 तक, केजी से ऑनवर्ड यहीं तक पे पढ़ा। केजी से ऑनवर्ड आपने यहीं पढ़ा है? तो 2008 में मैंने ज्वाइन किया था। 2008 में ज्वाइन किया था। अच्छा ये बताएं कि आप स्पोर्ट्स में कैसे आ गए यहाँ पे? कह रहे हैं क्रिकेट का मुझे बहुत शौक है और क्रिकेट जो है यहाँ पे हमें वो मतलब सिखाया जाता है स्पोर्ट्स के अंदर। यहाँ स्पोर्ट्स कोच मौजूद है, आपके कोच मौजूद हैं? कह रहे हैं हाँ, कह रहे हैं डेफ टीचर्स हैं, वो हमें प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं कि क्रिकेट को कैसे खेला जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे सिखाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप पहली बार ग्राउंड में गए पाकिस्तान की जर्सी पहन के, कैसा लगा आपको? कह रहे मैं गया हूँ और मैं बहुत खुश हुआ, पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे जो है वो जिस तरह मैच हुआ, और ये कि वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और हमने पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया। दैट्स अमेजिंग। अच्छा जब आप लोगों को मेडल्स पहनाए गए, आप लोगों की तस्वीरें खींची गई, तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पे स्प्रेड की गई, कैसा लगा आपको उस वक्त? कह रहे ज़ाहिर बात है खुशी होती है कि जब आपका नाम जो है आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो, फिर एज अ डेफ कम्युनिटी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हम कुछ कर सकते हैं, तो बाकी ये खुशी का मकाम होता है हमारे लिए। अच्छा तो अब आप जॉब भी यहीं डेफ रीच में ही कर रहे हैं? जी जी, कह रहे मैं जो है डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का जो है प्रोजेक्ट जिसमें कि हम लेसन्स बना रहे हैं डिजिटल, उसमें उस टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो ये ख़वातीन और हज़रात आप लोगों को हमने सिर्फ एक प्रोटोटाइप दिया कि किस तरह से आपकी ज़कात, आपके अतियात, आपकी इमदाद
उन लोगों तक पहुंचती है जो कि मुआशरे की सबसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, और इन बच्चों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। ये बच्चे पाकिस्तान का बैच पकड़ते हैं, ये बच्चे पाकिस्तान का एक इमेज, एक मुस्बत इमेज पूरी दुनिया में फैलाते हैं। आप लोगों के पास इस हवाले से कई खदशात और सवालात हो सकते हैं कि हमारी ज़कात क्या मुस्तहिकीन तक जा रही है, क्या वाकई इस इदारे को हमारी ज़कात की ज़रूरत है। इस हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर इब्राहिम ईसा, मौलाना इब्राहिम ईसा साहब, जो कि इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर पाकिस्तान में एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, वो इस इदारे के पैनल पे हैं। उन्हीं के हवाले से एक वीडियो हमारे पास एक बच्चे भी पढ़ते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा इदारा डेफ रीज स्कूल को शरिया एडवाइज़री फ़राम करता है ज़कात यूटिलाइजेशन के हवाले से, ज़कात कलेक्शन के हवाले से। इस इदारे में मुस्तहिक बच्चे भी पढ़ते हैं और उनके लिए ज़कात कलेक्ट की जाती है। जो ज़कात कलेक्ट की जाती है वो भी शरिया के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक कलेक्ट की जाती है। फिर जो ख़र्च की जाती है वो भी मुस्तहिकीन पर ख़र्च की जाती है। चूँकि इनके ज़कात का निज़ाम हमारी निगरानी में है, लिहाजा हम इसकी तस्दीक करते हैं कि जो मुखय्यर हज़रात या इदारे इस डेफ रीच स्कूल को ज़कात देंगे तो उनकी ज़कात अदा हो जाएगी और सही मसरफ़ में भी ख़र्च होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जनाब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले देखा कि किस तरह से इस स्कूल में, इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हम मौजूद हैं, ना सिर्फ ये कि बच्चे हुनरमंद पैदा हो रहे हैं और बच्चों को स्टार बनाया जा रहा है। एक सवाल आप सब लोगों के सामने आता है, और जैसे मुफ्ती साहब ने भी खुद भी बताया कि जनाब ये इदारा मुकम्मल तौर पर सर्टिफाइड है, सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी दीगर चीज़ें हैं, बहुत सारी बारीकियाँ हैं, जैसे कहा जाता है, कि जिनके अंदर हम जाना चाहते ही नहीं हैं, और बाज़ वक़्त जब जाते हैं तो ये ख़तरा पैदा हो जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ज़कात किसी गैर मुस्तहिक को जा रही है। ये तमाम बातें मैं लेके जाता हूँ जनाब अवैस भाई आपकी तरफ। आप बड़ी देर से खामोश बैठे हैं और यहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो अवैस भाई, इस इदारे के CFO हमारे साथ मौजूद हैं और आप भी मौजूद हैं, तो सर कुछ सवालात जो आप तक कम्युनिटी की जानिब से, फ्रेटर्निटी की जानिब से पहुँचते हैं, सर प्लीज़, स्टेज इज़ योर्स। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया। और उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम, होप आप खैर खैरियत से हैं। आप लोगों का शहरी का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में। वालेकुम अस्सलाम अच्छा, उवैस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र शुक्र फजल है माशाल्लाह। आज हमारे लोगों ने, जो हमारे व्यूवर्स हमारे साथ रहे, उन्होंने आज बहुत कुछ सीखा, सुना, समझा। और हमारे शफी और दीगर गेस्ट मौजूद थे, उनसे इस इदारे की क्रेडिबिलिटी को फर्दर जाना, पहचाना। उसके बावजूद भी लोगों के दिमाग में सवाल रह जाते हैं। तो जैसे भी इन्होंने मुफ्ती साहब की वीडियो क्लिप भी दिखाई कि ज़कात की का जो तरीक़ेकार है, प्रॉपर उसका ख्याल रखा जाता है। तो थोड़ा सा हमें जो है वो ब्रीफली आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो हमारी ज़कात पॉलिसी है वो क्या है। जी, थैंक यू उवैस भाई। अच्छा उवैस भाई, जिस तरह ऑलरेडी मुफ्ती साहब ने इस बारे में सारी बातें बताई हैं, मैं इसको फर्दर थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ। जिस तरह एक ज़कात देना एक हर मुसलमान पे जो है जिस तरह लाजिम है, और हर मुसलमान इस फरीज़े को पूरा करता है। और इस वक्त जो डोनर है उसका सबसे बड़ा कंसर्न भी ये है कि भाई नंबर 1 कि मैं जिस प्रोजेक्ट को दे रहा हूँ वो लेजिटिमेट है या नहीं है। नंबर 2 इसका ये है कि जो जिस मकसद के लिए मैं दे रहा हूँ वो गोल्स अचीव हो रहे हैं। और थर्ड, अगर मैं ज़कात स्पेसिफिकली दे रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू द शरिया रूल्स वो स्पेंड हो रही हैं या नहीं। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डेफ रीच के अंदर सिंस द बिगनिंग व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग द ज़कात, हमने उस वक्त से एक पूरा शरिया कंप्लाइंट मैकेनिज़्म पहले बनाया
ठीक है, जिसका ना उसके अंदर एक शरिया एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें 2 मुफ्ती इकराम जो है हमारे दारुल उलूम कराची से मौजूद हैं, उसके अंदर मैं भी उस बोर्ड का पार्ट हूँ। और सारा जितने भी SOPs हैं वो पूरी वेटेड की गई हैं और उसके बाद उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया उसके अंदर बहुत ही केयरफुली एक चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है और उसके बाद जो है ज़कात को जो है स्पेंड किया जाता है। तो उसके अंदर पूरी SOPs एक जो शरिया की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक SOPs मौजूद हैं और हर SOP को ऐसा नहीं कि एक दफ़ा सिर्फ रिव्यू करके बस उसको जो है बस अप्रूवल ले ली जाती है, बल्कि इस तरह समझें कि हर महीने जो ज़कात के पैसे आते हैं हर महीने वो उस SOP के थ्रू उस चैनल के थ्रू वो मूव ऑन होते हैं और हर महीने जो है उस पर ज़कात शरिया एडवाइज़र की जो है अप्रूवल ली जाती है और अप्रूवल होने के बाद उसको जो है दोबारा जो है यानी जब वो पैसे खर्च होते हैं उसके बाद अप्रूवल होती है, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म मौजूद है। तो एक पूरा शरिया कंप्लाइंट प्रोसेस मौजूद है और एडिशनली अभी कुछ अर्से पहले जो है SECP की तरफ से भी कुछ रेगुलेशंस आई हैं ज़कात जो ऑर्गेनाइजेशन ले रही हैं और जो लोग सर्टिफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है पूरा एक मैकेनिज़्म अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और उसको एक पूरे एक सर्टिफाइड तरीके से। और ये हमारी बड़ी कोशिश होती है कि जब भी कोई हमारा लोकल इंटरनेशनल डोनर हमारे पास आता है वो स्पेसिफिकली ज़कात के बारे में पूछता है, तो व्हाट वी डू कि हम उनको स्पेसिफिकली पूरा प्रोसेस ब्रीफ करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई डोनर चाहते हैं कि नहीं हम जो है डायरेक्टली जो आपके शरिया एडवाइज़र हैं उनसे बात करें, तो वी ऑलवेज शेयर द कॉन्टैक्ट विद दैम कि भाई आप यू फील फ्री टू स्पीक टू दैम। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली मुफ्ती इब्राहिम साहब को जो है कॉल करते हैं, उनसे हमारे बारे में मालूमात लेते हैं और सारे समझते हैं। तो वी आर क्वाइट लाइक ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ ज़कात कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है। और हम तो चाहते हैं अपने डोनर्स को हम ये कहें कि जब इदारे ने एक जो है वो पॉलिसी अख्तियार कर ली है और मुफ्ती साहब को एंगेज कर दिया है, तो इस पे भरोसा करें, इस पे ट्रस्ट करें और बाल की खाल निकालने में ना जाएं और अल्लाह के नाम पे अपनी ज़कात और अतियात दें। उसामा भाई, आखिरी सवाल आपसे मुख्तसर करूंगा कि अगर कोई ऐसा बच्चा आता है जो सैयद फैमिली से है जिस पे ज़कात ये सदका लागू नहीं होता, तो उस केस के अंदर जो है वो डेफ रीच की पॉलिसी क्या होती है? और ये भी बता दें साथ साथ मुख्तसरन, क्या तमाम बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं? वैसे भाई सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि जब भी कोई बच्चा हमारे पास एनरोल होता है तो उसका एज़ पर SOP वकालतनामा एक फॉर्म होता है जो कि उसके पेरेंट्स उसको फिल करते हैं, जो फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर इसमें जिसमें बहुत सारे सवालात हैं और वो उसी पे ही उन सवालों के ज़रिए ही उसको वो जब वो फॉर्म फिल किया जाता है तो उससे ही वो वेट हो जाता है कि इफ़ ही इज़ ज़कात एलिजिबल और नॉट। और जब वो फॉर्म भर लिया जाता है, वो सारे फॉर्म जमा होते हैं, फिर वो शरिया एडवाइज़र के पास जाते हैं जो उसको वेट करते हैं कि भाई ये बच्चा ज़कात ले सकता है या नहीं ले सकता, जिसमें मुख्तलिफ सवालात हैं जिसमें शरिया के मुताबिक जितना सैयद हैं वो नहीं ले सकते, तो वो ऑलरेडी उस मैकेनिज़्म के अंदर आ जाता है। अगर वो ज़ाहिर बात है ज़कात एलिजिबल नहीं होता टू डिफरेंट रीजंस, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो हमारा दूसरा पूल ऑफ फंड्स है जिसके अंदर नॉर्मल कोई लोग वॉलेंटरली हमें डोनेशन दे जाते हैं, ठीक है, या वो एक नॉर्मली सपोर्ट करना चाहते हैं विदाउट के अपनी ज़कात या सदक़े के जो उनका पूल है, तो फिर हम उस फ़ंड से उन बच्चों की जो है तालीम और तरबियत पे जो है पैसे खर्च करते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि बच्चों की खर्चात की, तो वो आपके सामने है कि सारे खर्चात हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको 100% एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, फ्रॉम द यूनिफॉर्म टू द लंच, स्टेशनरी एंड एवरीथिंग इज़ फ्री इन आवर स्कूल। और उसके अंदर जो है जो आपने बात की कि यानी स्पॉन्सरशिप जो है वो 100% है कि आप जो स्पॉन्सर करते हैं, जो डोनर पैसा देता है, वो 100% जो है वो बच्चों की तालीम, वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग, जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। बिफोर आई गिव द माइक बैक टू शफात भाई, टू यू, आई मीन जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो है वो हम रहते तो बाहर हैं लेकिन हमारे दिल अपने वतन पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। जरूरत इस अमर की है कि हम अपने दिलों की धड़कन को और या धड़कनों को पाकिस्तान में टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ पाकिस्तान पे तनकीद करने के लिए इस्तेमाल करें। और डेफ रीच जैसी मिसाल आपके सामने है। वो लोग कि जो आज सोचते रहे कि मैं आखिरी अशरे में ताकरातों में डोनेट करूंगा, शब कदर में डोनेट करूंगा, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मेरे और आपके पास ऐसी कोई गारंटी है कि हमें अगला लम्हा भी इस माह मुबारक मिलेगा? अगर आपने अपनी ज़कात निकालनी है तो इस मौके को सीज कीजिए और अल्लाह के नाम पे अता कीजिए। रब की ज़ात आपको उसके मल्टीफोल्ड देने वाली है। बैक टू यू शफात भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस ट्रांसलेशन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस भाई मौजूदगी का। और आप माशा नज़दीक तो आपने जिस कॉज, अल्लाह पाक इसकी जजा आपको देता रहे, पूरी कॉज आगे लेकर चला जाए और लोगों के कहीं बारीक से भी कोई खदशा मौजूद किया जाए। सर आपके साथ का, आपकी इस प्रोग्राम में मौजूदगी का
ख़वातीन और हज़रात, अब प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में दाखिल है, जो कि है आपसे इजाज़त लेने का। मेरे ख्याल में शायद अभी इरफान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अगर इरफान भाई हमारे साथ मौजूद हैं तो सर एनी लास्ट वर्ड्स, ताकि उसके बाद हम इस प्रोग्राम को इसके अख्ताम पे ले जाएं। No, thank you so much. I mean, last words are thanking the entire इंशाअल्लाह। I think it's a long journey. We all are part of it, and I really and truly appreciate what Richard has done for the Pakistan and for the deaf community in Pakistan. So we'll continue to support this, and I hope that the rest of our supporters and viewers will, continue to, be very cooperative with us and with this initiative. इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर इरफान भाई, आप की माशाल्लाह अप्रोच है ना, बड़ा बर्ड्स आई व्यू दिया था आपने जिस तरह से आपने बात शुरू की है। तो उम्मीद करते हैं कि इस सारे प्रोसेस का, इस सारे विजन का हमें फ़ायदा होगा, इस इदारे को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह बफ़ज़्लिल्लाह। ज़िंदगी रही तो आपसे बनफ़्से नफ़ीस में मुलाकात करेंगे अमेरिका में, और बहुत ज़रूरी है कि इस इदारे को उन लोगों तक पहुँचाया जाए जहाँ से जिन लोगों ने इस इदारे को फाइनेंस करना है। बहुत शुक्रिया सर आपकी मौजूदगी का, थैंक यू सो मच। And now coming back to you, Richard. This was our first experience. Now I would like you to have a few words about it. Our virgin voyage. Oh, your virgin voyage. Thank you. I mean, honestly, I'm very, very grateful. Shafat Saab, thank you so much for hosting, being here, and Oveis for, keeping the conversation going and being so spot on in your communications and comments. I'm just take this opportunity to just thank everyone that's watching, that tuned in to this. We're just very, very grateful for your support. When we started this work all those many years ago in that little one-room school, my wife and I were talking. We said, look, if this work is valuable to the community, then the community will support it. And frankly, this has been the model we followed. 80% of our support comes right from the local Pakistani community. 80% of it? 80%. And just because, as Irfan mentioned, it's only in the last few years we started going to the US. And thankfully now that's growing. And for us to be able to increase our impact, to take care of more children, we do need that added assistance. And I'm hoping we can grow that in the US, in the UK, Canada. But it's truly the generosity and the support of the Pakistani community that makes our work possible. And I just want to say Bobo Shukriya, we're very grateful. And, God bless you all. Thank you so much, Richard. And with that, ladies and gentlemen, इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान शफा को डेफ रीच पाकिस्तान के पहले डिजिटॉन से। इंशाल्लाह ये अभी हमने आज पहला सफ़र किया, ये सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा, आप लोगों से मुलाकात रहेगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम ये मुलाकात बहुत ज़्यादा करें, चूँकि डेफ रीच का काम, डेफ रीच के लोग, डेफ रीच के चैम्पियंस पूरी दुनिया को दिखाने लाजमी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।